We go ahead with standard costing. It's 503 or 513. 3 hours evening show. Let's go ahead to the final. Concentrate. If you remember, in the very first chapter, you would have done objectives of costing, and in which you would have learned cost reduction and a cost control to be the two objectives of cost accounting, cost control and a cost reduction. Listen up carefully. Cost reduction was permanently reducing your cost by improving methods of production, by changing raw material or changing your process of production completely. It was a radical change in the way you do production or the way you process goods, and thereby you achieved permanent reduction of cost. Like for example, Hex India, an animal husbandry company operating from Pune, they replaced glass by plastic for selling the medicine that they were selling to their customers. So there was a glass bottle in which the medicine was put up and that was sold. Glass was basically used to protect it from sun rays, but over a period of time they could develop a method by which a plastic bottle coupled with a corrugated box could also be used to protect the medicine inside that particular bottle from getting affected by sun rays. So when you replaced glass by a plastic bottle, it was a permanent reduction that was achieved by Hex India into their production process or distribution process. So when you change your method of production, I hope you keep quiet. When you change your entire production method or the distribution chain or supply chain, and you try to achieve a radical improvement in your cost, I call it as a cost reduction. In costing, we don't have too many techniques of cost reduction because cost reduction is primarily concerned with methods of production or the methods of doing your business or selling your or rendering your services to your end consumers. So it is more on operational front than on management accounting that you have to work on cost reduction. So I gave you an example of how a glass bottle was replaced by a plastic bottle and a corrugated box to wrap it so as to protect a medicine from sun rays. I have given you one example in the financial management, which is, I will not say a cost reduction as such, but intention was not cost reduction, but it ultimately resulted into cost reduction when Close Up came up with the Deepika Padukone ad campaign back in early 90s, and they increased the diameter of Close Up, which resulted into a significant increase in the sales of Close Up because Close Up got consumed at a faster rate than the Colgate, their nearest rival at that point of time. And they could achieve a significant surge in the production of Close Up, thereby leading the fixed cost per unit to come down. That was an example of a cost reduction. So there are ways and means through which a cost reduction is achieved by the companies. For example, you have great scope in working on this particular field. One of
my friend CA Vinit Dev, he's working in real estate and he has achieved a lot of cost reduction for some companies by changing the construction structure of a building to include more natural lighting to come into the building and thereby saving on the light consumption that happens inside a building. So if a more natural light comes up, you will not require too many tube lights as such, and you could have a better lighting, you could have better efficiency of workers, but that needs to be planned at a very early stage. So you change the way you do a business, way you make your products, so that cost reduction can be achieved. You can go on and find out a lot of examples whereby businesses have achieved cost reduction either by changing raw materials completely or by changing the methods of production. Like automobile industry has achieved a huge cost reduction by moving towards just-in-time from forecast-driven inventory system. Earlier, majority of automobile companies in India and across the world were following forecast-driven inventory system. Now they have moved towards just-in-time, and thereby inventory costs have been reduced permanently. Inventory carrying cost. So businesses try to do a cost reduction which is more of a long term in nature than the short term or for a particular period as such. Mr. Outside 90 degrees. Cost control is not as permanent as cost reduction, whereas a cost control is basically trying to ensure that actual cost that you spend remain in certain parameters, remain within certain range as you have budgeted earlier or as you have predicted earlier, or the standards that are set by you. Now I said in cost reduction or on cost reduction front, we don't have too many techniques in costing as such, though there are few one. The research that has taken place in the costing or management accounting is not focused on too much on cost reduction. I can give many examples of cost reduction. I can go on. There is no problem on examples of cost reduction, but all those examples, how they are achieved by using costing technique, I cannot explain because they are more on operational front. I can explain the operational part, but how the cost reduction you achieve by using costing techniques, I can give very limited examples. I've given one more example in FM in my opinion, which was used by Satish Nadagowda, a chartered accountant, for working for airline, I forgot the name, Southwest Airlines, for doing fuel hedging, whereby I had told you that an airline books a flight ticket today for a customer, but the travel takes place after 1 year. After 1 year, the fuel cost can be anything, but flight ticket is booked today. So today you don't know what is going to be the fuel cost after 1 year. So you entered into a fuel futures or fuel F&O on fuel or commodity derivatives, it is technically called as. Chicago Board of Exchange and CME Group have wonderful fuel hedging contracts available in the NYSE, New York, and they used these futures and options for doing hedging and predicting what could be the commodity or the fuel cost 1 year down the line and accordingly do the pricing of the tickets. It's a clever way of doing a business that is achieving cost reduction kind of. In costing, we do have certain techniques for cost control part. Cost control is trying to ensure that a cost remains within predefined parameters or pre-estimated parameters, and standard costing is one of the tools that is used by the businesses for cost control. One of the most widely used tools. All the standard costing principles are as it is used by SAP R3 FICO. I implemented this for 6 months of my articleship. I worked for around 12 to 13 hours a day with a wonderful team of people. C.A. Shashikant Lonikar, he works for the Photon Motors, Asia's largest company into the commercial automobile vehicles. He's heading the Asia Pacific group of Photon right now. We implemented this together in the Tata Yazaki.
I postponed my CA final attempt to implement this SAP R3. I got an opportunity to give attempt 6 months ago, but I had decided that rather than becoming leading academician, it would be better to learn something practical. And this FICO, the CO is completely on standard costing module. CO stands for control. FI stands for finance. So this entire logic of the standard costing is widely implemented by the world's most popular ERP system as of now. I don't see that SAP R3 will continue for a very long period because Vishal Sikha has resigned from SAP. He's taken over at Infosys. It is Vishal Sikha's brainchild as operations head in SAP. The logic is a business needs certain set of tools which can be used to keep the cost within control. Cost overrun should not take place. So there should be some kind of a dashboard reporting on a regular basis, on a periodical basis, whereby as a manager or as an entrepreneur or as a senior level organizational employee, I need some kind of reporting on my desk, either in a printout form or on my laptop or my tablet, whereby I need to get, okay, this cost overrun is taking place. Go and talk to that concerned employee or concerned team or concerned department. Why is that cost overrun taking place? I need a quick resolution, quick big bug fix out there. Constant data. There are so many things. I have not planned anything of the lecture. You don't know the kind of thinking that is required to go at the back end. You come here and you talk for 12 hours, then you'll realize. There's nothing planned. There is all the examples. If you, let's say there are some students to whom I taught the costing in the November 16 attempt. If you will find out whatever I taught, many examples are new examples. They are not given in that last time. They could tell you. These examples are fresh off the brain. Every batch you will find out some different example. I don't remember examples. These are live processing, live feeding. So you need some sort of technique whereby I get to know that these costs are incurred more than what we had budgeted for. This is where we are doing saving. This is where we are spending more. And you need to take actions, management corrective actions immediately and instantaneously. And that is where the standard costing helps you. Standard costing is a great tool aimed at cost control. It's highly used in real life because it's a business oriented tool. It's not a tool for just doing reporting to the end users. It is not a formality that you do. Financial accounting in many cases I consider personally to be a formality. It does not tell me it does not give me a great insight into the business as such. It lacks on a variety of aspects. Though it is useful, I'm not saying not useful, but the management accounting tools are too great. That's why I told you in the morning, SEMA professionals earn thrice of chartered accountants. Reason is why they are into the management accounting, but getting into management accounting is not possible for everyone because the number of people in management accounting are going to be always lesser than the financial accounting and the tax area. Number two, management accounting is going to require a common sense brain. It's not going to have a standardized stereotype situation. Financial accounting is a stereotype situation. You learn financial accounting rules in one organization, you can replicate them in all the organizations. Management accounting, it may not happen. The way you implement a standard costing in Bajaj Auto and the way you implement it in TVS Motors and the way you implement it in Hero Honda and the way you implement it in Eicher Motors can be different. Every organization has some of its own characteristics, own features, and you need to understand and adapt to that. That is what management accounting is. So, before I go on to explain what do you mean by standard costing and what are we supposed to do in this chapter, I would like to highlight three basic terms. Because these terms will bring a lot of things in terms of variance analysis before you. These terms are
budgeted costs, standard cost, and actual cost. Basic terms. So, budgeted cost, standard cost, and actual cost. Three basic terms. What is budgeted cost? Cost expected hello. So, keep quiet. What do you mean by budgeted cost? It is a cost estimated for budgeted quantity. So, if I had to just put it in terms of formula, budgeted cost is equal to budgeted quantity into budgeted cost per unit. So, for particular budgeted quantity, how much cost you are expected to incur? कितना cost incur होना चाहिए? था नहीं बोला मैंने. I did not say था. था means past tense. I don't want past tense. It is budgeted. Cost expected to be incurred for a particular period. Where the standard cost is cost that should have been incurred for actual output. Now, there is a difference between a budgeted cost and a standard cost. Lot of people think that the budgeted cost and the standard cost are same. They are not same. Budgeted cost is for budgeted quantity. Standard cost is not for budgeted quantity. Standard cost is for actual quantity. जो actual output आपने प्रोड्यूस किया है उसके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था. Now when this ta comes, there is a standard cost. It's a past tense.
So you can calculate a standard cost only after actual production is over. We do not compare budgeted cost with standard cost. When we talk about a variance, we don't compare budgeted cost with the standard cost. We compare standard cost with actual cost. Because if we compare these two, it is a nonsensical comparison. Let's say, I should not give such, let's say, example. Standard cost is a cost that you should have incurred for actual output. So if I had to put it in mathematical formula, standard cost is equal to actual quantity of output multiplied by standard cost per unit or budgeted cost per unit. Standard cost per unit, budgeted cost per unit, both are more or less same. Actual cost, this is time pass. Actual quantity into actual cost per unit. Sir, my sack is missing. Anybody? Okay, the one who sent a message, has he found? मिल गया? Found it? Anybody found it? Green color, brand Young. Young. Brand Young करके उसका brand है. Anybody please check it and give it. Shambhavi, you found it? So, he's relieved completely. Were there any objectionable contents inside it? Listen up. मुश्किल है. Concept. You do not compare actual cost with the budgeted cost. You do not compare standard cost and budgeted cost. When we talk about variance, we talk about comparison of standard cost and actual cost. So, biggest difference between these costs is the quantity that you are using for analysis. In one case, you used actual quantity. In one case, you used budgeted quantity. Am I right? Okay. Before I move ahead to the variance analysis and the meaning of standard costing, I'd like to put some more point on standard word. Standard costing is a technique where you set, please do not make noise. You set two types of standards and you use those standards for cost control process. How you use it, I'll explain once I explain meaning of two standards. Primarily speaking, standards are physical standards and the price standards. Standards are benchmarks that you have set. In articleship somewhere, you should read Colin Dury on management accounting to get a wonderful insight into the management accounting. I got this from Mr. Colin Dury only. So, we got wonderful opportunity at Tata. If you get ever opportunity, Blue Diamond के वहाँ पे वो लेने ना,
अब टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, and there are some wonderful lectures that go on out there. You need somebody from Tata Group to be your friend or colleague or something to get an entry into it. If you ever get, it is possible quite easily. You go out there, you'll find out some wonderful research oriented. It's completely dedicated towards research. It's masterpiece. Just दो डायमंड का जो लेना उसके थोड़ा सा पहले ही वाड़े कॉलेज के बगल में, बस वाड़े उनका फेंसिंग एक ही है. Physical standard and price standard. Listen to this. Cost is driven by quantity that you consume, and the cost is consumed by, or cost is driven by the price at which you procure it. Let me give example of physical standard. Bill of material that engineering department or a design department in organization prepares is nothing but an example of physical standard, whereby a manufacturer or a design department says, in order to produce 1 unit of finished goods, these all materials will be required in these quantities. ये हो गया आपका physical standard. And you specify this much quantity of raw material will be required for each unit of finished goods. It is very rigid in terms of definition. इतना ही लगेगा या इतना ही लगना चाहिए था to make a production. That is physical standard. If you adhere to these physical standards while carrying out a production, cost overruns can be avoided. Like Nestle makes Maggi. To make 100 grams of Maggi, how much wheat should be consumed? ये एक standard है. That standard, they need to follow it very strictly. It will depend upon the quality of raw material that you get. It will depend upon the training that you are given to the workers, because during the manufacturing process, workers may not feed the mix appropriately and it could lead to a defective production. It will depend on a variety of factors, but there would be a standard that would have been set up by the product team कि एक 100 kg or 100 grams of Maggi के लिए कितना wheat लगना चाहिए. It is more serious on products where processing or let's say some kind of conversion takes place rather than the products where assembly takes place. In a electronics division or electronic product, physical standards को adhere करना बहुत easy होता है, because to make a one laptop you require this much of screen, this much of RAM, this much of this, easily available होता है. Assembly करना है ना आपको basically, तो adhering to the physical standard becomes easy. Adhering to the physical standard becomes very difficult. Take an example of Asian paint. जब आपको पेंट बनाना है तो आपको बहुत, let's say you want to make a paint of a different shade. You have some basic shades of paint, but you want to make a specific combination of RGB. Today at least computerized mixing has come up and you can create the paint of the type that you need at any point of time easily. Computer mixing करता है. But during the days of manual processing, there could be slight mistake in mixing of the input paint, and then your entire output paint color is totally different than what you want. You are gone for toss. So you are not able to adhere to the standard कि इतना mixing करके इतना output आना चाहिए. You will enter into the losses during the processing. So bill of material is a classic example of physical standard. Every organization, whenever they design a new product or launch a new product, they will prepare a minutest possible list of materials that are required to produce that finished goods, and they'll say to make 1 unit of finished goods, these all materials are required in this much quantity, and they'll keep on checking whether the bill of material and actual production are adhering to each other. Tata Toyo in Pirangud, they used to make silencers, and the exercise that we had carried out
was take a bill of material to make 1 unit of silencer for a particular type of vehicle. उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स है, तो ये गाड़ी का साइलेंसर बनाने के लिए कितना स्टील लगता है, ये बिल ऑफ मटेरियल में लिखा था. गो टू द फैक्ट्री, हंड्रेड्स ऑफ साइलेंसर्स ऑफ दैट व्हीकल, कीप ऑन चेकिंग उसको एक्चुअल में कितना स्टील लगा है. आप बोलेंगे सर क्या स्टील सेम रहेगा ना? आउटपुट में स्टील सेम रहता है, इनपुट में कितना स्टील डाला है. क्यों? प्रोसेसिंग लॉस होता था. आपके बिल ऑफ मटेरियल में लिखा है कि एक साइलेंसर के लिए 450 ग्राम स्टील लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 480 लग रहा है, 30 ग्राम वेस्ट हो रहा है कटिंग में. वो वर्कर जो है परफेक्ट कट नहीं ले पा रहा है, परफेक्ट जॉइंट नहीं ले पा रहा है, वो परफेक्टली वेल्डिंग नहीं कर पा रहा है ठीक से, वेस्ट हो रहा है मटेरियल. सो यू शुड पीरियडिकली चेक whether the physical standards that are set up by your production department or your engineering team or your design team, are they actually followed or not. Another example of physical standard, time and motion study. By carrying a time and motion study, organization fix up for this particular process, these many minutes, these many seconds, these many hours should be taken by the worker to do the production. It's a physical standard कि अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में ये पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट करना है तो हाउ मच टाइम यू शुड टेक. I'll show you one wonderful video. क्या दिमाग है. Observe this. I do not want discussions, please. I told you I require 10 to 12 hours to explain the concept. That job I'm going to do in few hours. Where's it gone? Give me that discount. Where is the folder gone? We'll just get it. 2 minutes. It should be there on the other hard disk. It's got limited size. I'll show you time and motion study standard setting कैसे किया था in a company which is into the jeans manufacturing. While manufacturing a jeans, physical standard, time and motion study standard, machine level standards, they are set up with the actual real life example. So basically, the success of standard costing lies on how cleverly, how clearly you set up the standards. Physical standards in terms of consumption of material, in terms of the time that workers should take, in terms of machine that you should be using for making a production. In various terms, you use a lot of physical resources in carrying out a production. When you use a lot of physical resources in carrying out a production, in what proportion these resources should be used is basically physical standard. जितना clearly आप
स्टैंडर्ड सेटअप करोगे ना उतना आपको परफेक्ट एनालिसिस मिलेगा. इफ योर स्टैंडर्ड इज वे बियॉन्ड एक्चुअल you'll always get adverse variances. Actually 15 kg रॉ मटेरियल लगता है फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स. आपने स्टैंडर्ड में लिख के रखा है 10 kg भी होना चाहिए. Standards should be realistic, standards should be pragmatic, standards should be capable of being achieved by the workers in normal course of production. Then only your variance analysis is going to be logical that we are going to do. Price standards are basically rates that you fix up. The rate at which you should be procuring raw material, rates at which you should be paying to the workers. But physical standards are more static in nature. Rate standards are more variable in nature. Rate standards need periodic revisions or updates. Physical standards don't require update as long as you have not altered your product. As long as you are not altered your product, rate standards do not require a change. Rate standards, physical standards don't require a change. Bill of material, if you have not made any change, will remain same. The time that a worker should take to make produce 1 unit should remain same. But there is one wonderful theory on the standard costing, which is standard costing come operation research, learning curve theory, which says that the time that a workers take to make 1 unit of finished goods keeps on declining as the experience of workers goes on increasing. So before you actually start implementing standard costing in any company, you must learn how to set the standards in advance. Only when you set realistic standards, practically capable of being achieved standards, you will be successful in doing variance analysis and your decisions will actually start yielding certain results. So that is standard setting. So first you set the standards appropriately and then we proceed ahead with other things. I don't remember in which hard disk it's. I'll look at it. Just a minute. Anybody has a card for a different type of hard disk? Old hard disks? किसी के पास पुराने hard disk का card है by mistake? हाँ? Office में let me. I'll Google it. Google पे मिलेगा. Wait, yes? No. You old. अरे 3.0 old type of hard disk चाहिए. नहीं, ये old नहीं. Even old hard disk it is like a Android kind of connector. Old connectors kind of. It's USB 1 and 2. Okay, ठीक है. Let it be. We'll get some another parallel video over YouTube. It should be able to search. Listen up. Because that video, we had made it. Yes. मिल गया. Okay. We got a card. Good. Observe. It should be there. It requires it requires a power. This hard disk is not getting the power. Right on that. Meanwhile, we'll try to search a similar video on Google. Listen to this.
observe. I made a specific video which was But first, where would we be without jeans? Probably all wearing cords. And for those who like their denims to be a cut above, They're arguably the most popular piece of clothing in the world, yet they're also one of the most individual. As any urban cowboy will tell you, nothing fits so well as a pair of denim jeans. Jeans were invented not long after the California Gold Rush, when a certain Mr. Levi Strauss began making miners denim work pants with... it's not there. So let him try. Turn on the lights. Light क्यों बंद कर दे? Just give it. Let it be. It's old. I'll explain. Please reduce noise. So आपको दो टाइप के स्टैंडर्ड समझ गए? Physical and rate standards, or physical standards and the price standards. So using these standards, we are going to get to the standard costing and we will analyze variances. ये दो स्टैंडर्ड समझ गए ना, तो variance का एनालिसिस जब करूंगा ना, तो मैं हर बार आपको इसके लिंक करने वाला हूं. You'll observe that. So we set physical standards and we set rate standards. Using these two types of standards, we are going to arrive at certain variance analysis. Standard costing says profitability of an organization should be calculated as under profitability statement or income statement should be as under. Profitability statement I am making under standard costing. This statement basically goes on to explain how you analyze your cost or how you present your costs. You take your sales less standard cost of goods sold. You take your standard cost of goods sold. What is standard cost? Standard cost is a cost which you are set in advance, taking into consideration physical standards and rate standard. Standard cost is a cost that you are set up in advance by taking into consideration physical and rate standard. तो ये जो profit आता है, therefore this is called as a standard profit. क्या बोला मैंने इसको? Standard profit. This standard profit includes an implied assumption. When I say standard cost of goods sold, I am making implied assumption in this. Implied assumption is inventory is valued at standard cost. Inventory is valued at what? Standard cost. ये हमारा assumption है. Inventory is valued at a standard cost. तब जाके हमने standard cost of goods sold कैलकुलेट किया. कैसे कैलकुलेट करें standard cost of goods sold? Standard cost of goods sold is nothing but quantity sold into standard cost per unit. हमने पहले ही प्रोडक्शन शुरू होने के पहले ही हर एक यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया. कैसे?
1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए इतना रॉ मटेरियल लगता है. स्टैंडर्ड रेट एट विच आई शुड प्रोक्योर रॉ मटेरियल इज सो एंड सो. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज सो एंड सो. एक यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स लगना चाहिए. 1 आवर के लिए वर्कर को 15 रुपया रेट देना चाहिए. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर. सो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स, which is nothing but a kind of absorption rate. You have set the standard regarding the physical things and rate standard, and you prepare standard cost card. I will show you standard cost card also below. Just have patience about this. आपको एक क्वेश्चन आता है कि prepare income statement under standard costing, prepare income statement under absorption costing, and prepare a reconciliation between the two. ये करने के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्टेटमेंट कैसे बनता है वो समझना है. सो इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यू टेक अ सेल्स माइनस व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है. स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब क्या? अज्यूमिंग ऑल एक्चुअल कॉस्ट आर सेम एज स्टैंडर्ड, आप इतना प्रॉफिट कमाओगे. बट एक्चुअल में ऐसा होता है करे, एक्चुअल कॉस्ट आर इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट कुड बी मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कुड बी. सो हम इस स्टैंडर्ड कॉस्ट में लेस करते हैं एडवर्स वैरिएंसेस. जितने भी वैरिएंसेस एडवर्स है हम उनको डिडक्ट करते हैं. एड फेवरेबल वैरिएंसेस, एक 1 by 1 ऑल वैरिएंसेस, जो भी एडवर्स है उनको माइनस करो, जो भी फेवरेबल है उनको ऐड करो, एंड यू अराइव एट एक्चुअल प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. This actual profit under standard costing and the profit under absorption costing do not match. Why don't they match? Inventory valuation is at standard cost. Absorption costing में standard cost पे नहीं होता है, actual cost पे होता है. बच्चों, standard costing is allowed even for financial reporting. AS2 permits standard costing in accounts. However, ICAI has not allowed standard costing by default. ICAI has given a choice for standard costing if it is impractical to use other methods of costing like absorption costing. By default, standard costing cannot be used for preparation of financial statement. But internal analysis के लिए you can use standard costing. Nobody is going to stop you for management accounting, but ICAI will stop you for what? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी आप इन्वेंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट पे दिखा सकते हो. अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकल के आता है? आई विल शो यू स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड एक स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है बेसिकली फॉर 1 यूनिट. स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इज नॉर्मली फॉर 1 यूनिट. 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कैसे आपका कॉस्ट कैरी आउट होगा. लेट अस टेक let's take example of a Louis Philippe or Aditya Birla Nuvo, the company which makes or which sells the Louis Philippe shirts in India. Madurai Garments है Aditya Birla Nuvo के अंदर. So let's say Louis Philippe का एक शर्ट है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाएंगे. क्या बनाएंगे बच्चों? उसमें लिखेंगे वो रॉ मटेरियल. नाउ इसके अंदर आपको लिखना है फैब्रिक. हम लिखेंगे फैब्रिक के अंदर 2 मीटर्स लगना चाहिए एट द रेट ऑफ ₹600 पर मीटर. ये 600 पर मीटर बन गया रेट स्टैंडर्ड. 2 मीटर बन गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड. अब ये 1 यूनिट जो होगा ये उसका एक स्टाइल कोड होगा, प्रोडक्ट कोड होगा, जो भी आपको कहना है. सो फॉर दिस टाइप ऑफ शर्ट वी शुड रिक्वायर 2 मीटर फैब्रिक. ₹600 पे ये फैब्रिक हमने प्रोक्योर करना चाहिए, तो ₹1200 का फैब्रिक लगना चाहिए हमको. देन लेट्स से थ्रेड. थ्रेड्स का यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुड बी इन सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, व्हाटएवर. सो लेट्स से वी रिक्वायर 12,000 सेंटीमीटर्स एट द रेट ऑफ 0.05 पर सेंटीमीटर. सो उसके लिए थ्रेड लगता है. इट मैटर्स अ लॉट to the minutest possible detail. कितना आता है? हाँ 600. वाओ, कितना आता है? 600 आ रहा है. 005 करो.
इतना लगता नहीं कभी. 60 रुपीज का थ्रेड लगेगा. यू विल से इसके लिए बटन्स लगेंगे. So you could say buttons, 10 buttons at the rate of 0.8 per unit. 8 rupees. 10 buttons you could require, spare buttons you could have to provide. उसके लिए कलर लगेगा, बिकॉज जो फैब्रिक होता है बच्चों वो नॉट नेसेसरली कलर्ड होता है. नॉर्मली द फैब्रिक दैट यू मेक इज व्हाइट, देन यू पुट अ कलर और डाई प्रोसेस ऑन दैट. कुछ आपको कभी देखा होगा आपने तो इसलिए ये फैब्रिक जो होता है फैब्रिक मासेस में बनता है, फिर उसके बाद कलर लगता है. सो दैट्स व्हाई यू गेट डिफरेंट कलर शेड्स ऑफ द सेम फैब्रिक. सो फैब्रिक एक साथ ही बनाते हैं ये लोग, कलरिंग बाद में करते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर स्टाइल कोड और डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड. तो कलरिंग प्रोसेस के लिए आपको कितना क्वांटिटी लगता है? लेट्स से यू रिक्वायर 600 और 750 मिलीलीटर्स at the rate of rupees 300 per liter. Calculate करो. Yes, Jay. How much is it? Shut your mouth and please tell me the figure quickly. Silence. कितना? कितना बोला? वापस बोल. एक 2 सेकंड रुको, बोल जल्दी. जल्दी. 225. भाई साहब ने क्या किया? 750 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000. 225 और 22.5. 225 रुपए का कलर लगाएगा तू. कितना आंसर है? 22.5. करेक्ट आंसर इज 225. सो टोटल मटेरियल 1200. अभी इतना महंगा कलर नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द शर्ट टू शर्ट. कितना है? 1493. Wages of the worker, if you want to put up, now you will put up in terms of hours into rate per hour. 3 hours. 3 hours is too much. So let's say 30 minutes at the rate of 200 per hour. तो लग गया 100 रुपीज का वेजेस. मशीन कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट्स 30 मिनट्स पे मशीन पे चलेगा ये एट द रेट ऑफ 80 पर आवर. सो 40 रुपीज. अदर ओवरहेड्स यू कैन पुट अप. सो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टी शर्ट और पर शर्ट इज 1633. ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया. ऐसे रियल लाइफ में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनते हैं. देयर आर standard cost. I have prepared this standard cost card for many products. इतना माइन्यूटेस्ट लेवल पे ट्रैकिंग होता है. और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का अप्रूवल लेने का प्रोसेस या बनाने का प्रोसेस जो होता है ना, इट टेक्स अ डेज इन रियल लाइफ. अभी हमने जो मिनट में काम कर लिया. सो entire success of standard costing lies on these two categories of standard: physical standards that were set up and the rate standards that we set up. These were rate standards. So the success is on this, because आप जो आगे variance करने वाले हो वो variance किसकी वजह से आने वाला है? Differences in quantity or differences in rate. Cost ultimately, cost is the outcome of these two things, na? But if you do not understand how these two things come up, you will never understand the variance. You'll have to mug up the formula for variance. So raw material and wages, ऐसे overheads वगैरह चीजों के लिए आगे. So once we set these standards, we can prepare an income statement whereby we try to control our cost within the standard cost framework.
कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी एंड रेट, तो हम दोनों के ऊपर ट्रैक रख सकते हैं, बट हमें जब रिपोर्टिंग होगा डैशबोर्ड पे कि आपका कॉस्ट ज्यादा खर्चा हो रहा है या कम खर्चा हो रहा है, तो मुझे ये पता चलना चाहिए, am I spending more because of quantity consumption or am I spending more because of rate variances? I'm spending more or less due to what? If I'm spending lesser, I'm spending lesser due to decline in the prices or due to the decline in the consumption. I need to know, and then corrective management actions can be taken up. If I'm spending lesser, it is also worry. It could be affecting quality of the product, or I need to at least reward my workers. If I'm actually spending lesser, I need to go and thank that particular worker. I need to say to him, boss, thank you for the wonderful production that you've done. You achieved the targets. We'll reward you in the form of some bonus or something. Or you could just say thank you. That could be more than enough. But that process must be there in an organization. You go to Big Fours, you'll find out during articleship, you'll get kudos. आपने अच्छा काम किया, thank you. हर बार आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं होता है. आपने कुछ अच्छा काम किया, kudos, thank you. You did good work. That could also be enough. That could motivate a worker to even do better next time. But these kind of processes should be set up in an organization whereby you should be able to get on your dashboard. These costs overruns are taking place. This is where you are saving the cost, and these are the persons who are responsible for this. Ultimately, fixing it to the process or ultimately fixing it to the individual employee is what going to take the organization further. And that is why standard costing matters a lot to the organizations. So income statement under standard costing, did you understood? Sales less standard cost of the goods sold, it gives you standard profit margin, from which you deduct adverse variances, to which you add favorable variances, you get actual profit. This actual profit of standard costing will not match with the profit of absorption costing. You will have to prepare reconciliation statement. Primarily क्या होगा? Absorption costing में inventory will be valued including fixed overheads. यहाँ पर भी fixed overhead include होंगे, but they will not be at actual rate. They will be at a standard rate. So automatically when you do this in the standard costing, inventory is valued at standard cost. Automatically हो जाता है inventory. So ठीक है. So chapter talks about different types of variances. It talks about material cost variances, labor cost variances, overhead cost variances, sales variances, and control ratios. 5 चीजें चैप्टर में आपके कवर्ड है. In addition to income statement preparation, income statement I have already covered. How do you present income statement? बनाया था आपने income statement? Income statement आपको डिटेल में होगा. So income statement, but you should understand the feel of, or you should get a feel of it at least. I go on to variances. From learning point of view, material variance, labor variance, and variable overhead variances come up in one category, because all these are variable cost. Fixed overhead variances go in a altogether different category. They work in a different manner. Sales variances work in a different manner. So I'll pick up 3 categories of variances in one go: material, labor, and variable overhead. One by one I'll explain logic of everything. In general, variance is difference between standard cost and actual cost. ये मैंने आपको ऊपर भी बोला था. Do not try to remember negative means adverse and positive means favorable. It works majority of the times, but on certain cases negative variance could be a favorable, or a positive value could also turn out to be a adverse. Depends on case to case, because in IPCC majority of the variances that you are going to learn, negative means adverse and positive means a favorable. But risk in that is as under. Number one risk, गलती से कभी आपने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल लिखने के अलावा एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड लिख दिया.
and you say figure negative आ गया इसलिए adverse है, but actually it could be a favorable variance. कुछ समझा मैंने क्या बोला? Sometimes, occasionally, it could happen that you swapped actual and standard. That's why you could go wrong. Number one risk. Number two risk. When you go to the CA final, यही variances आपको और ज्यादा डिटेल में है. तो वहां पर even if you standard minus actual, negative answer could mean a favorable variance, and positive could mean a adverse variance. So remember, if you learn right now, negative means adverse and positive means favorable, you'll face a problem later. So for every variance, please do not go by sign, mathematical sign. Every variance you try to apply a logic and then tell yourself, is it adverse or is it favorable? I go to the first variance. Material cost variance. Still, noise is there. You should not discuss even for eating food or asking pain or looking into neighbors. I literally slap you. I am already losing my concentration. Material cost variance. Because this chapter is altogether a different level. It cannot be compared with any other chapter. Material cost variance. बच्चों, गॉडफादर फॉर्मूला सा सेम रहेगा. क्या रहेगा गॉडफादर फॉर्मूला में? Standard material cost minus what? Actual material cost. So we take standard material cost minus actual material cost. Difference between the two is material cost variance. If actual material cost is more than the standard, it is adverse. If actual is lesser than the standard, it is favorable. What do you mean by standard material cost? How much cost should have been incurred on material for producing actual quantity of output? अब देखो, हम दो तीन कैरेक्टर को लेते हैं और इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का स्टोरी. लेट्स से मिस्टर हर्षद कोंडे इज प्रोडक्शन मैनेजर. ही इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ही इज बेसिकली गोइंग टू टेक raw material from stores department and carry out a production. So he is responsible for consuming raw material. Who's Arshad? Production manager. क्या काम है उसका? Raw material का consumption करना. Mr. Bora is a purchase manager. क्या काम है बोरा का? Procure raw material. Mr. Bora is responsible for procuring raw material at or below the standard price. Mr. Harshad is responsible for ensuring that the raw material consumed in making finished goods is equal to or lesser than the standard raw material mentioned in bill of material. हर एक बंदे का मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया है. अब मुझे ये जानना है कि ये my cost overrun will take place because of either Harshad or Bura or both. When cost overrun will take place? If he consumes more material than what should have been consumed, or when Bora spends more than the standard cost, or both. Or it could happen one is favorable, one is adverse. So moment my cost is more than the standard cost, I should not start firing both of them. I should do my own analysis to whom to fire and how much to fire. To whom and how much. That is going to give me the breakup or analysis of variance. So Mr. Harshad is responsible for what? Production or consumption of raw material. Mr. Bora is responsible for purchase. ये basic idea चालू हो गया.
अब मैं इसको एनालिसिस में जाएगा, बट एनालिसिस के पहले ये वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है देखो. स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? Standard material cost is going to be calculated by taking into consideration how much raw material should have been consumed. Standard cost is not with reference to actual rate. Standard cost is with reference to standard rate or budgeted rate. It is SQ into SR. Standard cost is how it is calculated. Standard quantity into standard rate minus actual cost is actual quantity into actual rate. अब ये standard quantity क्या है? Standard quantity is raw material quantity that should have been consumed, for actual finished goods produce. तो जो फिनिश गुड्स आपने प्रोड्यूस किया उसके लिए कितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी लगना चाहिए था? लेट अस टेक अ सिचुएशन वेयर you produce of one finished goods, but that one finished goods requires 3 different raw material. तो हम क्या करेंगे बच्चों? रॉ मटेरियल A, रॉ मटेरियल B, रॉ मटेरियल C. ये 3 रॉ मटेरियल्स है. तो मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि कितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है. आई विल कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड. अब ये फिनिश गुड्स जितना प्रोड्यूस हो चुका है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? दैट डिपेंड्स ऑन बिल ऑफ मटेरियल. दैट इज वेयर फिजिकल स्टैंडर्ड कम्स इनटू द पिक्चर. आपने टाइल्स का एग्जांपल किया है? टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल है वो. लेट्स से one tile to make a one tile you require cement, you require sand, and you require certain chemical for mixing, or let's say certain pasting. Nowadays vitrified tiles पे pasting होता है ऊपर. Certain chemical, let's say sand, chemical and cement. Simple. ये 3 मटेरियल का मिक्सिंग करके आप एक टाइल बनाते हो. One tile to make it, how much sand should be consumed? Now, you may not express it every time for one tile. You may express it for 1000 tiles, or you may express it for 1000 square feet of tiles. Unit of measurement, you have to be very much careful. The biggest problem that you face in standard costing analysis is unit of measurement. फिनिश गुड्स का आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था ऑफ मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी. ये एबीसी क्या है? आपके रॉ मटेरियल है. समझा आपको? एबीसी आर व्हाट? रॉ मटेरियल. I say to make one unit of finished goods or to make certain quantity of finished goods, not necessarily one unit. हम यहाँ पे क्या क्वांटिटी बात कर रहे हैं? एक्चुअल फिनिश. जो भी एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिस्पॉन्स. SQ. What is standard quantity? Raw material that should have been consumed. I did not say purchased. Standard quantity that should have been consumed. फर्क समझा के क्या बोला मैंने? SQ. कुछ तो क्वांटिटी आएगा इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट. इन सब का टोटल जब लोगे, दैट इज दिस स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट. दिस इज अ कॉस्ट दैट यू शुड हैव इंकर्ड. This is a cost that you should have incurred in. You are डिस्कस कर रहे हो तुम लोग.
थोड़ा बहुत लेवल रखो, फर्स्ट डे को ही तुम कुछ चिल्लाना है। Standard cost is the cost that should have been incurred in producing actual quantity of finished goods. Cost मतलब raw material cost, huh? Because we are talking about material cost only. Material cost that you should have incurred in producing finished goods is this. But actual में जो consumption हुआ है वो कुछ अलग हो सकता है ना। Into SR नहीं लेने वाला मैं, AR। आप जाके देखो कितना मस्त एनालिसिस क्रिएट होने वाला है, you'll go mad। ये एक्चुअल कॉस्ट आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने बोला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। बट आउट ऑफ दिस हाउ मच इज ड्यू टू मिस्टर हर्षद एंड हाउ मच ऑफ दिस इज ड्यू टू मिस्टर बोरा, आई नीड टू एनालाइज। क्यों? किसको कितना गाली देने का, किसको इंसेंटिव देने का, किसको चॉकलेट देने का, किसको पनिशमेंट देने का, कैसे जानकारी? वो जानकारी के लिए हमें एनालिसिस करना है, और करना है सब एनालिसिस करना है। बट बिफोर आई गो फॉर दैट, वन बेसिक थिंग, कॉमन सेंस। ये लाइन से मैं फॉर्मूला क्रिएट करने वाला हूं। व्हेन यू इवैल्यूएट अ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, he is not concerned with variation in the rates. He is not concerned with variation in rates. When I evaluate the performance of purchase manager, he is not concerned with variation in the quantity. Mr. Purchase Manager, he is responsible to supply whatever is demanded by production manager. Purchase manager is to supply to production manager or production department whatever they have demanded. He is not supposed to ask a question, why are you demanding more than the standard quantity? तेरे को क्या बोला? Supply करना है। उसने material मांगा, you are supposed to give it to him. He is not supposed to ask a question, why are you demanding more than the standard quantity? है ना? Similarly, production manager is not supposed to ask a question, at what rate are you procuring? Why are you procuring at a higher rate? दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना। दोनों का फंक्शन की वजह से मटेरियल कॉस्ट कैन बी मोर स्पेंड मोर और लेस। यू लुक फॉर योर ओन जॉब। क्या काम है तेरा? व्हाट इज योर जॉब? प्रोक्योर मटेरियल एज रिक्वेस्टेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर। व्हाट इज हिज जॉब? डू द प्रोडक्शन विद इन गिवन रॉ मटेरियल. Right? He may consume more. Right? Concentrate. He may consume more raw material. He may consume lesser. He may procure at higher rate. He may procure at lower rate. ऐसा भी हो सकता है. Some materials he procures at higher rate. Some materials he procures at material by material. I am not interested. बोरा बोलता सर मैंने देखो 4 मटेरियल मैंने सस्ते में खरीदा, लेकिन जो एक मटेरियल तूने सस्ते में नहीं खरीदा, excess that you have spent on that one material could be more than the savings that you have done on the 4 material. सर देखो ना सर, मैंने शर्ट इतने सस्ते में शर्ट लिया, लेकिन पार्टी पे जो खर्चा किया वो ज्यादा किया। 4 आइटम पे सेव किया लेकिन एक आइटम पे ज्यादा खर्चा किया ना। रॉ मटेरियल अब आपको ये थीम समझ गया होगा ना। देखो अभी फॉर्मूला कैसे क्रिएट करता हूं। डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला। इफ यू अंडरस्टूड थीम, 2 मिनट में फॉर्मूला क्रिएट होगा। अगेन आई गो बैक। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, अरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस हाउ डू यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आता है बच्चों? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इट डिपेंड्स ऑन फिनिश गुड्स प्रोडक्शन क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन फिनिश गुड्स प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड बिल ऑफ मटेरियल।
कितने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए और उतने गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था. That is going to be called as the standard quantity. Are you clear on this? Standard rate कहां से मिलता है आपको? From where do you get standard rate? Standard rates are already fixed by you in advance. बच्चों, I told you online, revision to the standard rate should be more frequent as compared to revision that happens to bill of material or physical standards. Physical standards are more or less static in nature. Physical standards are more or less static in nature, but rate standards are more susceptible to the changes because rates frequently change, and especially in an industry where metals or physical commodities are used, rates are bound to change. Do you agree with this? So SQ into SR is equal to standard cost of material. AQ into AR is equal to actual cost of material. Do you agree? ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ये फेवरेबल कब आएगा, एडवर्स कब आएगा, समझा आपको? Oh, we are not going to calculate favorable adverse for each material item. Overall, all materials put together standard cost इतना है, all materials put together actual cost इतना है. So either total basis पे adverse या total basis पे favorable. Do you understand this? Can I go to analysis of the material cost variance? If you understand this, labor is done. मैं सिर्फ एक वर्ड बदलने वाला लेबर में, सिर्फ you'll understand. Have patience. Analysis of what? Material cost variance. कितने लोग हैं हमारे पास? 2 लोग हैं. एक प्रोडक्शन वाला है, एक परचेस वाला है. इन दोनों के हम 2 वेरिएंस बनाएंगे. The 2 variances that I'm going to make is material price variance MPV and material usage variance. MUV. Purchase manager is responsible. Production manager is responsible. So ऑक्स का जो ऑक्स है वहां पे लाइन है, वहां पे ऑक्स, अरे बटन ऑक्स पे लिखा है ना, उसको ऑक्स से निकाल दे. 5th बटन ऑक्स लिखा है वहां पे, देख. There is will be one button which is on the ox. Hello. हाँ, it is on what? ऑक्स पे नहीं ना अभी. हाँ ठीक, गुड. So material price variance, who is responsible for this? Purchase manager. अब देखो 2 मिनट में फॉर्मूला क्रिएट करता हूं. मैंने एक लाइन बोला था अभी आपको. मिस्टर बोरा, purchase manager is not supposed to ask a question, why do you want more material or why do you want less material? बुरा का काम क्या है? जितना भी मटेरियल एक्चुअली बंदा प्रोडक्शन का बंदा मांगेगा उसको सप्लाई करना है. Purchase manager or price variance is for a difference between standard rate and actual rate. So for every material I am going to take SR minus AR. This is a difference on per unit. This is calculated separately for each material, and then total of all materials is taken up. MPV is equal to SR minus AR into AQ. Why AQ? Logic of AQ is very simple. Purchase manager is not responsible for excess quantity, or he should not be credited for consuming
lower quantity. Purchase manager's performance should be evaluated on the basis of. Purchase manager's performance should be evaluated on the basis of difference in the rate, not for difference in quantity. तो जितना भी हर्षद ने डिमांड किया उतना बोरा ने सप्लाई करना चाहिए, है ना? So AQ is quantity consumed. Now MUV ये कौन है बच्चों? प्रोडक्शन मैनेजर है. He should be credited for difference between SQ minus AQ. But बच्चों, if there is an excess price paid or lesser price paid, should he be rewarded for that, or should he be punished for that? Production manager should not be punished or should not be rewarded for difference in rate. That's why we take standard rate here. So production manager is evaluated for difference in quantity. But if you don't multiply by SR, it will answer in quantity. We want to answer in rupees. To convert in rupees, we are multiplying by standard rate. Similarly, for Bora, if I just take SR minus AR, it will be difference in rate per unit basis. Into AQ will be actual quantity, because difference in rate is not only enough. I need to multiply by quantity also. Do you understand this? Bacho, MCV is equal to MPV plus MUV. इन दोनों वैरिएंस का जो टोटल आएगा, दैट टोटल विल बी इक्वल टू मटेरियल प्राइस वैरिएंस. कैसे? आप इन दोनों का अगर ये फॉर्मूलाज का टोटल लोगे, you'll automatically get the same thing that was there. For example, MPV क्या आता है? SR minus AR into AQ, correct? Plus ये क्या था? SQ minus AQ into SR. Can I open up the bracket? If I open up the bracket, it is SR into AQ minus AR into AQ. AR AQ नहीं, AR into AQ लिख देंगे हम अच्छे से. Plus SQ into SR minus what? AQ into SR. Yes or no? कुछ कर सकते हो क्या आप इसको मॉडिफाई? क्या मॉडिफाई कर सकते हो? कुछ कैंसिल हो सकता है? क्या कैंसिल हो सकता है? फर्स्ट एंड SR into AQ and AQ into SR are one and the, so ये दोनों कैंसिल हो गए. So ultimately what do you remain with? AQ into AR, but वो माइनस है टर्म, फर्स्ट टर्म है वो माइनस, प्लस SQ into SR. If I modify that, it is SQ into SR minus AQ into AR, which are the same formula of MCP that we did. This I hate from the bottom of my heart. What do you achieve by doing this? 1 mark. What you should achieve is the commentary on MPV and MUV. Let me give further more commentary. ये MUV क्यों होता है? Material usage variance. MUV is because of the following reasons. कुछ भी reason हो सकता है. But just categories there of broad thinking. Who are you? Production manager. Good. ये production manager ज्यादा material consume करता है. Actual quantity consumed. Oh, by the way, if AQ is more than SQ, variance is adverse. And there, if AR is more than the SR, variance is adverse. तो negative है तो मतलब adverse से चलता है यहाँ पर. But वो याद रखना पड़ेगा आपको हर बार. क्या काम है तेरा? Production करना. Now, why does material usage variance arise? It arises because of, number one, multiple reasons बोल रहा हूँ quickly. Raw material is of a poor quality, or raw material is of a better quality than the standard quality that you have considered. So you actually get more finished goods from the same raw material, or you get so difference in the quality of raw material can lead to the material usage variance. Number one. Number two, defect in the machinery that is used for production. Stand up. Quick. Stand up. Just finish. Stand up. Last bench. ऐसे move करके last bench जाके बैठना.
Last bench out there corner. So you need to understand. Go to desert. Madam, बैठ जाओ आराम से. Go to desert. आओ चढ़ के बाजू में. Quick. So difference in quality of raw material can lead to usage variance. मशीन इज डिफेक्टिव, तो मशीन ने ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर लिया या मशीन में कम मटेरियल कंज्यूम कर लिया. Another reason, workers were new, so workers were not trained, so they had done wrong feeding of material. That's why you took excess material, or that's why you required lesser material. If workers are more trained than what you are considering the standard. So quality of the workers, quality of raw material, the way the machines are working, all these factors affect material usage variance. The way the instructions are given by the production supervisors to the workers does affect material usage variance. So these factors affect material usage variance. Material price variance, that is Mr. Bora's responsibility. It could be affected because of how well he did the negotiations with the suppliers, how external factors like inflation rate and let's say global economic factors have turned out, because those factors can affect the prices of metals and base commodities. These prices are subject to lot of macroeconomic factors. तो आपने standard rate में ये changes estimate नहीं किए थे. So prices can fluctuate, quantity used can undergo a change. I need to know before I can fire them or before I can reward them who has contributed to keeping cost within the control, or who is responsible for cost overrun. Is it Bora or is it Mr. Harshad? तो ये मटेरियल प्राइस वैरिएंस और मटेरियल यूसेज वैरिएंस हमने निकाल लिया. कैसे निकाल लिया बच्चों? A, B, C. ये मटेरियल हम लिखेंगे. प्राइस वैरिएंस के लिए क्या करेंगे बच्चों? MPV is equal to MPV, material price variance is equal to difference in SR minus AR into AQ. तो ऐसे हम A equal to लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, माइनस 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 करेंगे, ये कुछ तो लिखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, AQ लिखेंगे, ये वैरिएंस आएगा यहाँ पे कुछ तो हर एक आइटम का, कुछ एडवर्स होगा, कुछ फेवरेबल होगा, आउटर कॉलम में कुछ तो टोटल होगा, फेवरेबल या एडवर्स. ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे? MUV, उसका भी टोटल आएगा आउटर कॉलम में. इन दोनों का जो टोटल होगा दैट शुड मैच विद द MCV. आर यू क्लियर? सो मटेरियल प्राइस वैरिएंस क्लियर, मटेरियल यूसेज वैरिएंस क्लियर. मटेरियल यूसेज के वापस दो बच्चे होते हैं. Material usage variance. Listen to this. This is a little tough. Material usage variance analysis can be done only if two or more materials are used. If there is only one material, this usage variance sub-analysis does not arise. This is sub-analysis. If two or more materials are used. If two or more materials are used, then we'll do the sub-analysis of material usage variance. This is done between material mix variance and material yield variance. Okay, let me explain the logic. बच्चों, ये यूसेज वैरिएंस मतलब
you have used either extra material or you have used what? Lesser material. Either of the two. You have used extra material or you have used what? Lesser material. Depending on whether you have used extra material or depending on whether you have used lesser material, adverse या favorable आएगा. और उसका और सब analysis करते हैं. Material usage variance was analyzed at standard rate. Material usage variance का formula क्या था बच्चों? SQ minus AQ into standard rate. So when you do the sub-analysis will also be done at standard rate only. Because we are not understanding the difference of price. Price का difference हमने already बोरा को debit कर दिया है, product को credit कर दिया. We have already decided to hold purchase manager responsible for price variance. Now we are talking about production manager. उसका sub-analysis कर रहे हैं हम. Material mix variance. Let me give a simple example. Material usage variance can also arise due to the changes in the way raw material is mixed as compared to what was the standard mixing proportion. Let's say Nescafe has a vending machines across country. आपने programming किया हुआ है. Whenever somebody orders a filter coffee on the machine, you should use 80 milliliters. Out of 80 milliliters, 45 milliliters should be milk. Remaining should be water. And then you should put something of coffee, something of sugar, something of... Okay, no? Okay. It's okay concept. तो आपका standard mixing proportion है 45 milliliters of milk, 25 milliliters of water, assume. And then some sugar and then some coffee. Now the two materials, that is milk and water, have different cost. Milk is costlier, water is cheaper. Tomorrow, if the mixing proportion that is done actually is different from the standard mixing proportion, the actual cost will be different from the standard cost. Standard cost of 1 cup of coffee is comprising of 45 milliliters of milk and 25 milliliters of water. But the actual cost could comprise of 50 milliliters of milk and 20 milliliters of water. Though the total quantity of actual coffee is same as the standard proportion. But the mixing of the output input is done in a different proportion. If you have done the mixing in different proportion, see, कितना मिलीलीटर लगना चाहिए था? 70 मिलीलीटर लगना चाहिए था. 70 मिलीलीटर में से 45 was milk, 25 was water. एक्चुअल में आपने 70 के जगह पे 80 मिलीलीटर कंज्यूम किया. 70 से 80 जो डिफरेंस है ना, that is going to come in a material yield variance. I'm not interested in analyzing that variance right now. वो material yield में आ जाएगा. हम क्या बात कर रहे हैं? जो भी मटेरियल आपने कंज्यूम किया उसको आपने अलग प्रोपोर्शन में यूज किया. 45 to 25 ये प्रोपोर्शन है ना. 70 मिलीलीटर लगना चाहिए था, आपने 80 मिलीलीटर लिया. बट 80 का जो ब्रेकअप है बिटवीन मिल्क एंड वाटर शुड बी इन द सेम रेशियो एज 45-25. इफ इट इज नॉट इन द सेम रेशियो देन मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल कम. 70 से 80 जो है वो यहां पे नहीं आएगा, वो मटेरियल यील्ड में आएगा. To make one coffee, you should have used 70 milliliter. But to make same one coffee, you have used 80 milliliters. That is, you have got same yield with more input. वो yield variance में आएगा. ये और एक है यहाँ पर material yield. हम yield नहीं सीख रहे अभी. हम क्या सीख रहे हैं? Mix. Material mix variance बोलता है कि जितना भी material आपने input दिया है, that material is it in the same proportion as standard proportion? Or is it in some different proportion? If it is in different proportion, material mix variance will arise because all materials may not be having same cost. If all materials are having same cost, material mix variance आएगा ही नहीं. कैसे भी proportion में mix करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? Cost same ही रहेगा ना. But it will rarely happen that all the materials carry same price per unit.
मिल्क और वाटर का प्राइस सेम, ऐसा होगा ही नहीं, फिर मिक्सिंग का कोई मतलब ही नहीं होता ना। कुछ समझा क्या आपको? सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस अराइजेस बिकॉज actual material that is consumed in some different proportion than standard proportion. So material mix variance MMV is equal to standard mix minus actual mix into standard rate. Now this, what do you mean by standard mix? बहुत सारे बच्चे standard mix मतलब standard quantity लेते हैं and that is bullshit square. SM is not standard quantity, it is a standard mix. What is standard mix? Standard mix is actual quantity of raw material or total actual quantity of raw material mixed in, mixed nahi, divided in or distributed in स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, वट एवर इज अ स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. तो अगर एक्चुअल रॉ मटेरियल का क्वांटिटी इज मिक्स्ड इन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, व्हाट विल बी दिस? एम इज नथिंग बट AQ. एम इज सेम एज व्हाट? AQ. ये वेरिएंस कब आता है बच्चों? अगर मिक्सिंग का प्रोपोर्शन कुछ अलग है तो. इफ मिक्सिंग प्रोपोर्शन इज सेम एज स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, देन द वेरिएंस विल नॉट कम. क्यों? हम यही एक्चुअल क्वांटिटी को स्प्लिट कर रहे हैं. स्प्लिट कर रहे हैं बिटवीन व्हाट? बिटवीन द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. देखो ना, अभी 70 मिलीलीटर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन था. 45 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क, 25 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर शुड मेक 1 कप ऑफ कॉफी ऑफ 70 मिलीलीटर्स. एक्चुअल में आपने 1 कप ऑफ कॉफी किया 80 मिलीलीटर्स का बाय यूजिंग 50 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क एंड 30 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर. मतलब आपने क्या किया? 5:3 में मिक्सिंग किया. Whereas mixing should have been in the 9:5. 9:5 के जगह पे आपने मिक्सिंग कितने में किया? 5:3. हाँ ना? तो अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल इनपुट कितना एक्चुअल में आपका इनपुट है? 80 मिलीलीटर्स. अब वेरिएंस मुझे निकालना है. MMV is going to be for milk, I'm going to say standard mix. Standard mix क्या होगा? Actual quantity 80 milliliters divided in the standard proportion of 9:5, not in the ratio of 5:3. 5:3 is the actual ratio. Take on your calculator. 80 into 9/14. 51.43 should have been the milk and water 28.57 minus actual mix is 50 and 30 into मिल्क का रेट था 80 रुपीज पर, अच्छा ये मिलीलीटर से ना, रेट पर मिलीलीटर चाहिए भैया. मिल्क इज 80 रुपीज डिवाइडेड बाय 1000. 0.08. लेट्स से स्टैंडर्ड रेट आपका 0.08 है. वाटर का अलग आएगा 0.02 लेट्स से. तो यू कंज्यूम्ड लेसर मिक्स ऑफ or you consumed lesser of milk. So this much will be 51.43 minus 50 into 0.08 favorable. 0.11 favorable. Amount पे मत जाओ, कंसेप्ट सुनो. और ये 0.02 क्या है? एडवर्स. ओवरऑल बेसिस पे 0.09 फेवरेबल है. क्यों फेवरेबल है बच्चों? रिमेंबर अ गोल्डन लाइन. इफ costlier material is used lesser, you'll have favorable material variance. बच्चों AM का टोटल और SM का टोटल हमेशा सेम रहेगा, because SM is nothing but AM mixed in standard proportion. SM is nothing but what? Actual material mixed or distributed in standard proportion. तो बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं? 80 मिलीलीटर जो 9:5 में स्प्लिट होना चाहिए था, वो आपने 5:3 में स्प्लिट कर दिया. ये 9 पैसा जो आ गया ना, दैट डिफरेंस इज बेसिकली बिकॉज यू कंज्यूम्ड 1.43 लेसर ऑफ मिल्क एंड यू कंज्यूम्ड 1.43 मोर ऑफ वाटर. But 1.43 more of water is cheaper than 1.43 lesser of milk. Difference is basically 0.06 in terms of rate.
So take another calculator, 1.43 milliliters into 0.06, so it should be 0.09. इसलिए फेवरेबल आ रहा है वो. अच्छा, वो मिल्क के लिए फेवरेबल क्यों आया? बिकॉज एक्चुअल मिक्स इज लेसर देन स्टैंडर्ड मिक्स, सो यू हैव कंज्यूम्ड लेसर देन द स्टैंडर्ड, तो फेवरेबल. और एक्चुअल में आपने यहाँ पे वाटर ज्यादा कंज्यूम कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज एडवर्स. Material mix variance arises if there are two or more materials, number one, and they carry different price. If all the materials carry the same price, material mix variance आएगा नहीं. If all the materials are mixed in the same proportion as the standard proportion, material mix variance आएगा नहीं. कुछ समझा क्या? अगर स्टैंडर्ड रेट ये 0.08 दोनों जगह पे होता ना, तो आंसर भी वही रहता था. बट मिल्क इज चीपर, सॉरी, वाटर इज चीपर देन द मिल्क. अरे समझा क्या कोच? ये क्या रेशो था? मटेरियल, ये क्या वैरियंस था? मटेरियल मिक्स वैरियंस. प्लीज डू नॉट डिस्कस. सो मटेरियल कॉस्ट वैरियंस, कितने बच्चे हो उसके? वो ग्रैंडफादर है. फादर कौन है? एमपीवी, एमयूवी. मटेरियल प्राइस वैरियंस इज बिकॉज ऑफ बोरा. मटेरियल यूसेज वैरियंस इज बिकॉज ऑफ हर्षद. प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. मटेरियल मिक्स वैरियंस, समझ गए आपको क्यों आता है? मटेरियल यील्ड वैरियंस. यील्ड वैरियंस अब क्यों आता है समझ लो पहले. एक कप ऑफ कॉफी के लिए 70 मिलीलीटर लगना चाहिए था, दैट इज एसक्यू. बट आपने 80 मिलीलीटर लगाया, दैट इज एक्यू. एसक्यू और एक्यू का जो डिफरेंस है इनटू एसआर इज ऑलरेडी द मटेरियल यूसेज वैरियंस. वो मटेरियल यूसेज वैरियंस में से समथिंग इज मटेरियल मिक्स, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग किया. समथिंग इज ड्यू टू डिफरेंट mix proportion, but something is due to yield. Yield is output. How much output you should have got from an input and how much output have you actually got. अगर आपने 80 मिलीलीटर का इनपुट दिया था तो आपका कॉफी 1 नहीं होना चाहिए था. इट शुड हैव बीन मोर देन 1 कप ऑफ कॉफी, बट यू गॉट ओनली 1 कप ऑफ कॉफी, मतलब नॉर्मल लॉस हो गया. If your input was more, output should have been also more, but output is lesser. That means your yield is lesser than the what yield should have been there. So this, the classic point here is all the variances that we have done so far, material cost variance is calculated for each material ABC. Material price variance ABC, ये यहाँ पे किया था मैंने ABC. Material usage variance ABC. मटेरियल मिक्स वैरियंस वो भी एबीसी. यहां पर मैंने मिल्क वाटर 2 ही लिया. मटेरियल यील्ड वैरियंस, द फर्स्ट वैरियंस व्हिच इज नॉट कैलकुलेटेड मटेरियल वाइज. इट इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल मटेरियल्स पुट टुगेदर. व्हाट इज इट? लेट मी एक्सप्लेन. मटेरियल यील्ड वैरियंस MYV is equal to SY minus AY. Please keep quiet. SY is standard yield. SY is what? Standard yield. What is standard yield? This is output that should have been achieved. Should have been achieved by using actual input. जितना आपने एक्चुअल इनपुट दिया है उससे कितना आउटपुट आना चाहिए था. SY is not in terms of material, SY is in terms of finished goods.
कितना फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए था. How much finished goods should have been produced? How much should be in the quantity of finished goods produced with the actual input of raw material? Actual input could have been in any proportion. अगर proportion different है तो MMV में already गया है ना? There is already material mix variance to take care if this input is in different proportion than the standard proportion. If actual input is in different proportion, I am already taking care of that in material mix variance. So that means how much output should have been there with actual input, assuming input in standard proportion. अगर जो भी input हुआ है 80 मिलीलीटर input हो गया ना, assuming that input is in standard proportion of 9:5, how much output should have been achieved? You should have achieved more than 1 cup of coffee. That is standard yield. But you achieved lesser than that. You achieved only 1 cup of coffee multiplied by standard cost of material multiplied by standard cost of material per unit of FG. For 1 unit of FG, how much is the standard material cost? उससे multiply करो. बच्चों, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं standard? मैंने SR नहीं लिखा है. Observe करो. Why? This variance is not for material. Each material wise नहीं निकलता ये. All materials put. इसका ब्रेकअप आप बोलोगे सर मुझे मटेरियल ए का ब्रेकअप दे दो, मटेरियल बी का दे दो. मैं नहीं दे सकता क्योंकि यील्ड एक मटेरियल की वजह से नहीं होता है. यील्ड बहुत सारे मटेरियल मिक्स करके आ जाता है ना. बालाजी का वेफर बनता है, पोटैटो, सॉल्ट, मसाला, ये सब मिक्स करके तैयार होता है ना. तो हाउ मच, लुक एट टाइल का एग्जांपल था. सैंड, केमिकल, सीमेंट, ये तीनों को मिक्स करके टाइल तैयार होता है ना. अब कम टाइल प्रोड्यूस हो गया, वो सैंड की वजह से हुआ, सीमेंट की वजह से हुआ, या केमिकल की वजह से हुआ, ये नहीं बोल सकता ना मैं. कोई भी नहीं बोल सकता है. दैट्स व्हाई ये वेरिएंस में ए बी सी नहीं करोगे आप. You need to understand the logic. If you are not going to understand logic and you are going to just do the formula, you could pass. But later on, you have not seen the world. I told you in the beginning, I postponed my CA final exam for 6 months. That is only because of this and the quantum of knowledge that I gained. And forget knowledge, the amount of confidence that you get. I started my teaching before my CA final result was out, when my family members were not believing whether I'll pass. I said, forget it, I'm going to pass. Because the quantum of confidence that generates, you have not seen it. You ask GB Joshi sir, what I was when I came down to P1 and what I was as a final product. The difference matters when you do the things on your own and understand it practically. But तुम लोगों को ना, तो कौन है तू? परचेस मैनेजर. इसका काम तो हमने 1 मिनट में खत्म कर लिया. एमपीवी, इसको हमने एनालाइज नहीं किया. दिस आइटम इज सब्जेक्ट टू एनालिसिस. MUV, प्रोडक्शन मैनेजर. ये प्रोडक्शन मैनेजर को हमने क्या एनालाइज किया? पहले हमने क्या किया, इसको जनरल ओवरऑल वेरिएंस निकाला हमने. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, SQ AQ. हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे इसको, हम फिर बाद में देखते हैं. चलो, SQ और AQ में फर्क है. क्यों फर्क है? फर्क इसकी वजह से हो सकता है बिकॉज ही मिक्स द मटेरियल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. इसने उसके वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दिया. वर्कर्स ने मिक्सिंग जो करना था वो अलग प्रोपोर्शन में किया, और मिक्सिंग सही ठीक से किया, लेकिन रॉ मटेरियल इटसेल्फ वाज पुअर क्वालिटी. इफ रॉ मटेरियल इज ऑफ पुअर क्वालिटी, यील्ड वेरिएंस विल टेल यू दैट. क्यों यील्ड वेरिएंस? स्टैंडर्ड यील्ड इज द यील्ड दैट यू शुड हैव गॉट. क्लासिक एग्जांपल देता हूं यील्ड वेरिएंस का, बहुत ज्यादा यूज किया हमने. Sugar cane recovery ratio. If you input 100 kgs of sugar cane, how much sugar you should get? It depends significantly on recovery ratio.
our cooperative sugar factories, and to an extent, Mr. Sharad Pawar has not understood this. He has understood it, but he could not implement. I'll not say he has not understood. Let's say we all are farmers. Okay, चलो चले. अरे जरा समझ लो कंसेप्ट. We all are farmers. हम हर एक के फार्म में शुगर केन आता है. मैंने शुगर केन बहुत अच्छे से डेवलप किया बिकॉज मेरा फार्म में फर्टिलाइजर्स ठीक से था, पानी ठीक से दिया था मैंने, कल्टीवेशन ठीक से किया. मिस्टर मांडके ने फर्टिलाइजर्स ठीक से नहीं दिया था, पानी ठीक से नहीं दिया था, उसके पास पानी नहीं था अवेलेबल. नाउ 1000 tons of sugarcane goes from Mandke's farm. 1000 tons of sugarcane also goes from my farm. Quantity of the farm is different, let's say. मेरे फार्म में से जो शुगरकेन गया उससे कितना शुगर निकलता है और मांडके के फार्म से कितना शुगर गया उससे कितना शुगर के निकलता है, ये रेशो अलग अलग होता है. It depends on quality of input. So tell me, 1000 tons of sugarcane supplied by me and 1000 tons of sugarcane supplied by Mandke, should both of us get paid at the same rate per ton? Entire India-wide cooperative sugar factories do like this. If you are a farmer, you will know this. I understood this somewhere in the 7th or 8th standard. Ratio नहीं समझे, वो तो बात नहीं समझा. मतलब we had about 120 buffaloes at our home till almost 7th or 8th standard. अजून नाही दूध काढू शकतो गाईचं, मशीन आहे, किक मारते. So गाई साथ जास्त. So we had a cow dung being used as a fertilizer. We are typically doing organic farming. So the quality of the sugarcane that we used to get in our farm was better as compared to the neighbor. But when the same sugarcane used to go to the sugar factory, we both used to get paid at something like 350 rupees per ton that time. Today it is something around 2200, 2300 rupees per ton. क्यों? क्योंकि हमारे लोगों को ये MYV नहीं समझा है. अगर मैंने जो 100 kg शुगर केन दिया उससे 12 kg शुगर निकलता है और मांडके ने जो 100 kg शुगर केन दिया उससे अगर 9 kg शुगर केन निकलता है, should we both be paid at same rate? Answer is no, because raw material quality is different. But ये एनालिसिस हमारे कंट्री में नहीं होता है. अब ये बोलेगा आप क्यों नहीं होता है? Some reasons are not political, practical reasons. Practically, measuring the output ratio for each person's input is not possible. कि मेरे 100 kg शुगर केन से कितना शुगर निकला, ये practically possible नहीं है. There could be lot of disputes. That's why every farmer is paid at a flat rate. But बहुत सारे कंपनीज में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. नेस्ले का फैक्ट्री है, फिनोलेक्स के बाजू में था. फिनोलेक्स नेस्ले का ऑडिट नहीं था हमारे पास, लेकिन फिनोलेक्स का ऑडिट था पुंडा, तो उसके बाजू में हम जाते हैं, टाइम मिल गया घूमते हैं. नेस्ले, when they procure cocoa beans, they don't pay all the suppliers of cocoa bean at the same rate. क्यों? The cocoa beans that they procure from Africa, they lead to a much better chocolate as compared to local cocoa beans. Nestle used to pay them at a different rate. क्यों? They say ये कोको बीन यूज करके कितना चॉकलेट का जो बेस मिलता है, चॉकलेट मिल्क पाउडर बेस करके रहता है, वो हमें कम मिलता है, लेकिन जो अफ्रीका वाला जो बंदा कोको बीन देता है उससे ज्यादा चॉकलेट पाउडर मिल्क बेस बनता है, जिससे हम ज्यादा चॉकलेट बना सकते हैं. तो विल नॉट पे एट द सेम रेट. एंड दे हैड अ प्रोसेस ऑन सैंपल बेसिस टू वेरीफाई कि ये कोको बीन से कितना चॉकलेट मिल सकता है, और उसके हिसाब से रेट फिक्स होता था. दैट प्रोसेस शुड एग्जिस्ट इन रियलिटी. दैट प्रोसेस डज एग्जिस्ट फॉर मेनी मटेरियल्स. यू गो टू मंडई और मार्केट यार्ड, ओनियन देखो, ओनियन पर लिला होतो कांद्याचा. इफ यू सी दैट ऑक्शन, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ ओनियन, रेट्स आर डिफरेंट. क्यों रेट डिफरेंट है? बिकॉज द yield that can be generated from that onion, let's say that onion is going to be used by Frito-Lay, वो पर्टिकुलर ओनियन लेके फ्रिटोले कितना सारा वेफर्स बनाएगा,
मांडके का ओनियन है और मेरा ओनियन है, हमारे दोनों के ओनियन में कुछ क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है. हाउ मच ऑफ चिप्स दैट यू कैन मेक कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ ओनियन. तो उसके वजह से रेट वेरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेट बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरिएंस. सो if you have kept a standard like 100 kgs of onion should lead to 20,000 chips being produced in number, or normally number में नहीं होता, measurement. 100 kgs of onion should lead to 83 kgs of chips. ये आपका स्टैंडर्ड है, हाँ ना? अब एक्चुअल में 100 kg चिप्स से लेके बन गया सिर्फ 75 kgs of 100 kg of onion से 75 kg of chips बन गया. That is yield variance. 100 kg of onion is raw material, chips is a finished product. SY is what? Standard yield. कितना output आना चाहिए था by using the entire actual input. AY क्या है? Actual yield that you have got. You must understand these things conceptually. You don't know the reality. If there is actual yield which is higher than the standard yield, it is a favorable variance. But using same raw material quantity, you have got more output than what output you should have got. इसमें सबसे important होता है standard material cost per unit. How do you calculate this? This is a mechanical formula to calculate this. Standard cost of material per unit of FG is equal to total standard cost divided by actual output of FG. मतलब क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं. ये ऊपर जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट में आपका ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, है ना? एक्चुअल आउटपुट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये जो हाईलाइटेड पार्ट है. दिस हाईलाइटेड पार्ट इज व्हाट? अरे दिस हाईलाइटेड पार्ट इज व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ. तो इसको सिर्फ डिवाइड करो एक्चुअल आउटपुट से, आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 unit of actual output. So standard cost per unit. Why I'm saying per unit? Because नीचे फॉर्मूला देखो आप. SY minus AY. SY minus AY is number of units. Number of units that you have got more or number of units that you have got lesser. Either you could be getting more units or you could be getting lesser units. कुछ समझा कि नहीं मालूम नहीं. Brain levels have depleted. That's what I can say. So SY minus AY, you could have got more input, more output or lesser output. If you have got more output, that is AY is more than the SY, variance is favorable. But this is a classic example. If AY is more than the SY, answer is negative. But actually it is not adverse, it is a favorable. इसलिए माइनस और प्लस नहीं याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा AY माइनस SY. बट क्यों ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हो दिमाग के साथ? भगवान ने दिया है ना आपको, यूज करो ना दिमाग. So I did 5 formulas on your screen, all 5 formulas in one stroke with a brief commentary on each one of them. Godfather, grandfather. Godfather वो Marie Puzo था ना? Marie Puzo correct ना? Godfather, who wrote it? Who is it? Material cost variance formula. Standard material cost minus actual material cost. SQ into SR minus AQ into AR. मटेरियल बाय मटेरियल अवेलेबल है ये, बट हम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर. आउट. 2 children. Material price, who's responsible? Purchase manager. Purchase manager is responsible for supplying actual quantity. He should be held responsible for a difference in.
So material price variance is equal to standard rate minus actual rate into actual quantity. Are you getting that? Actual quantity consumed. There is I don't know whether you did. There are two variances. Some people take actual quantity purchased. He should be held responsible for quantity purchased, not quantity consumed. But I prefer quantity consumed. There is a single plan and dual plan. जैसे दो plans है, IPCC में नहीं है. So you go ahead with the quantity consumed. सर ने वही सिखाया ना? Quantity consumed के हिसाब से. So formula MPV is equal to standard rate minus actual rate into standard quantity. Actual quantity. Right hand side. Material usage variance. Standard quantity minus actual quantity into Y standard rate. Any variation rate, he should not be blamed. He should be blamed only for variation in SQ is what? Standard quantity that should have been consumed for production of actual output. तो बच्चे material mix variance, material yield variance, sorry, material mix variance क्यों आता है? Material mix variance is basically because you have changed the proportion from standard proportion to actual proportion. कुछ तो actual proportion is different. So material mix variance will arise if there is a difference in proportion or prices of materials are different. MMV is equal to standard mix minus actual mix into standard rate. This also is available material wise. AM total and SM total must be same. SM is nothing but AM distributed in standard proportion. When it is adverse, if SM or if AM is more than SM, it is adverse, else it is favorable. Yield variance material wise नहीं मिलेगा क्यों? I cannot blame or I cannot credit that output is more because of this material or output is lesser because of this material. Sand, cement, chemical, किसकी वजह से ज्यादा टाइल बन गया या किसकी वजह से कम टाइल बन गया? बोल सकते हो क्या? आपने सब्जी बनाया, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया या शक्कर नहीं, जो भी है, सब्जी बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए. 3 रॉ मटेरियल की सब्जी बनता है. अब कौन सा रॉ मटेरियल की वजह से सब्जी का टेस्ट खराब हो गया? बट सब्जी वाला एग्जांपल मुझे पसंद नहीं है. MUV is equal to MYV is equal to SY standard yield minus into standard cost. What is SY? With actual input of material, how much output should have been produced? With actual input of material. That actual input कौन से रेशो में, क्या proportion में, I don't care. Actual proportion में जो भी है, we assume that it is in the standard proportion. And if it is not in the standard proportion, already दूसरा रेशो है ना. So with actual input of raw material, how much output you should have produced? क्या करना है आपको? Cross multiplication. इतना इनपुट था तो इतना आउटपुट आना चाहिए था, बट एक्चुअल इनपुट इतना है तो उससे कितना आउटपुट आना चाहिए था? What is standard yield minus actual yield? Difference could be favorable, difference could be adverse. When it is favorable, if actual yield is more than the standard yield, favorable, else it is. Don't forget to multiply it by standard cost of material per unit of FG. बच्चा normally does a one blunder, that is 3 material A, B, C. Material A का standard rate 10 rupees, material B का standard rate 20 rupees, material C का standard rate 30 rupees. Standard cost of material per unit of FG 10 plus 20 plus 30 60 rupees. 4 कान के नीचे खींचूंगा. ये standard cost of material is not an addition of the standard rate of all 3 materials. ये क्या है बच्चों? Total standard cost of all actual output divided by actual output. Are you clear on the concept? I spent too much of time on this. Why? लेबर अभी देखो कितना इजी होता है. लेबर में सिर्फ एक एडिशन होता है, आइडल टाइम वेरिएंस. बाकी सब कुछ लॉजिक ऑफ लेबर इज गोइंग टू रिमेन सेम. वेरिएबल ओवरहेड भी इसके जैसा ही है. सो 3 वेरिएंसेस एक स्ट्रोक में होता है. सेल्स भी इसके जैसा ही है. सेल्स में लेकिन सिर्फ लॉजिक उल्टा रखना है, बिकॉज़ इनकम क्या आता है. सो वंस यू अंडरस्टैंड material, labor, variable overhead and sales all get done very quickly.
Fixed vertical, it takes a time. Labor. Listen up. Grandfather. Labor cost variance is equal to. Pajgani, concentrate here. Standard labor cost minus actual labor cost. How do you calculate standard labor cost? SH into SR minus AH into, इसमें बहुत बढ़िया बाउंसर है, अमेजिंग बाउंसर लेडीज. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. ये ग्रैंडफादर है. LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इज इक्वल टू standard hours into standard rate. You could, just like there was different material, there could be different categories of workers: male, female, skilled, unskilled, skilled, semi-skilled, unskilled. So like this you could have different categories of workers. तो हर एक category wise आप काम कर सकते हो. Standard hours into standard rate minus what? Actual hours into actual rate. Now, first understand what is this SH. SH is standard hours. So from where do you get a standard hours? Standard hours कहां से मिलता है आपको? Time and motion study. You have done a time and motion study. You know for 1 unit of output how much time should be taken. You know actual output of finished goods. Do you know actual output of finished goods? So for this actual output of finished goods, how many hours should have been taken is known as what? Standard hours. So standard hours is the time that should have been taken to produce actual output. SR is at what rate you should have paid those workers. Lollipop है. सबसे important चीज AH. AH is actual hours. अब बोले क्या जोक है सर, इसमें क्या है? अरे इसमें ये जोक है. Actual hours paid for. बाउंसर है. को समझा होगा तो समझ में आने को हिंट मिल गया होगा. Actual hours paid for and actual hours worked for are different. दोनों का डिफरेंस इडली टाइम होता है. Difference is idle time. Which one is more? Actual hours worked or actual hours paid? Actual hours worked or paid? Actual hours paid will always be more than actual hours worked. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. एटलीस्ट हमारे कंट्री में तो नहीं हो सकता है कि you work for 10 hours but you get paid for 8 hours. नहीं हो सकता. Actual hours paid for are more than the actual hours worked for. The difference is idle time. But the idle time total cost में variance है. Idle time is a variance that will get captured in the LCV. सिमरन यहाँ पर अंदर जा, टाइगर अंदर जा, यहाँ पे बैठ, क्लिक. $25 pages to both each. So prior signatures required. LCV, not light commercial vehicle. Labor cost variance. टाटा मोटर में ये लॉन्ग फॉर्म यूज कर रहे थे. SH into SR minus what? AH into AR. AH actual hours paid for. Can I say if there is no idle time, AH and AW will be same? No, my mistake. Actual hours paid for and actual hours worked for will be same if there is no.
but don't forget to take actual hours paid for. In labor cost variance, you should take it as what? Actual hours paid for. अब इसके दो बच्चे, यहां पर जैसे मैंने बोरा और कुंडे को पकड़ा था, अभी तो अलग अलग बंदे लेगा। ये किधर गया? हर्ष किधर गया? निगड़ी वाला। नहीं, ये इसको कंटिन्यू रखते हैं। हर्षद विल कंटिन्यू, बोरा विल बी रिप्लेस्ड। हर्षद, who was he? Production manager. And Mandke is HR manager. Concept. What is the responsibility of HR manager? To hire the workers at standard rate and ensure that the workers get paid at a standard rate. What is the responsibility of production manager? To get the work done from the workers in standard time. Responsibility of production manager is to get the work done from the workers in standard time. बोले सर परचेस के टाइम पे भी आपने रॉ मटेरियल के लिए आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया था? यस, फॉर रॉ मटेरियल आल्सो ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट रॉ मटेरियल consumed is equal to standard quantity or less than the standard quantity. देखो अभी, हाँ, the words are to be sophisticated here. मटेरियल के केस में मैंने बोला था मटेरियल रेट variance. I cannot use the labor rate variance, or I can use labor rate variance, but the second variance को थोड़ा नाम हमें चेंज करना पड़ेगा. मटेरियल के केस में जो मटेरियल प्राइस था, मटेरियल प्राइस की जगह पे हम यहां पे बोल रहे हैं लेबर रेट वैरिएंस. मटेरियल यूसेज की जगह पे हम बोल रहे हैं लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस. हैव यू अंडरस्टूड लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस? लेबर रेट वैरिएंस, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एचआर मैनेजर. एचआर मैनेजर इज सपोज्ड टू एंश्योर दैट द वर्कर्स वर्क एट standard rate, but HR manager is not supposed to ask a question why workers are working for more number of hours or lesser number of hours. That responsibility goes to Mr. Harshad, production manager. If worker work for more hours or workers are paid for more hours, he is responsible. कितने घंटे वर्कर्स ने काम किया, इसको पकड़ो. ज्यादा काम किया, क्यों किया, उसको पूछो. HR को मत पूछो. HR क्या बोलेगा? क्या रेट पे हमने वर्कर को लेना चाहिए था और क्या रेट पे हमने लिया, इसका डिफरेंस मुझे पूछो. सो एचआर मैनेजर विल बी इवैल्यूएटेड एट डिफरेंस बिटवीन द रेट. सो लेबर रेट वैरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. ये कैटेगरी वाइज बनेगा, जैसे एबीसी था ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. एसआर माइनस एआर इनटू एएच. एएच व्हाट? एक्चुअल आवर्स paid for. Labor efficiency variance. ये किसके जैसा है? लेबर मटेरियल यूसेज वैरिएंस कैसा, बट वी डोंट से लेबर यूसेज, वी से लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? प्रोडक्शन मैनेजर. LEV, labor efficiency variance. Hey, tell me, LRV, when it will be adverse? If actual rate is more than the standard rate, it will be adverse. समझते हैं आपको? Labor efficiency variance. How do you calculate labor efficiency variance? अरे, how do you calculate labor efficiency variance? Standard hours minus actual hours into, but listen, लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस ये भी क्या है बच्चों? एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. अब बोलोगे सर वर्क फॉर आएगा, जरा संयम रखो. तो लेबर इफिशिएंसी वैरिएंस मतलब क्या बोल रहे हैं हम?
Hey बच्चों, by the way, do you know that efficiency can be calculated by two formulas? वर्कर का जो efficiency होता है, that is calculated by two formulas. What two formulas you use? It can be output based or it can be hours based. I'll come down to that just in a second. वर्कर का efficiency दो तरीके से कैलकुलेट होता है. Simple. I don't remember the formula. I remember logic. ये दोनों फॉर्मूला आपने सीखे होंगे लेबर चैप्टर में, वो यहां पे मुझे लगने वाला है. Listen up to this. I say 1 unit should be produced in 20 minutes. ये आपका स्टैंडर्ड है. एक वर्कर है जिसने 80 यूनिट बनाया 1500 मिनट्स में. व्हाट इज 1500 मिनट्स बच्चों? एक्चुअल आवर्स. आवर्स में लिखो या मिनट्स में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बोलते टाइम में हम एज बोलेंगे या डिवाइड बाय 60 करके बोलो कितना था. बोल रहे 1500 अपॉन 60, 25 आवर्स. सो बच्चों AH इज व्हाट? अरे व्हाट इज AH? एक्चुअल आवर्स. व्हाट इज SH? SH is standard hours. What is standard hours? It is time that should have been taken for actual output. Actual output कितना है? 80 units है ना? 80 units into 20 minutes divided by 60. 26.66 hours you should have taken. But you have taken how many hours? 25. तो आप efficient हो या inefficient हो? मतलब आपका आंसर 100 से ज्यादा आना चाहिए. सो इफिशियंसी परसेंटेज, ये हाल से रोवन के लिए आपको लगता है. इफिशियंसी परसेंटेज, इफ आई डू 25 upon 26, आंसर विल बी लेसर देन 100. सो आई शुड डू 26 upon 25. दैट इज आई शुड डू SH upon AH. SH upon AH is what? Efficiency ratio. Standard hours divided by actual hours. What is it? Efficiency percentage. If this percentage is more than 100, then variance is favorable. If this is lesser than 100, variance is adverse. बच्चों और एक फॉर्मूला है. एक्चुअल आउटपुट कितना था? अरे एक्चुअल आउटपुट कितना था? 80 यूनिट्स ना था. Now you should also learn to calculate standard output. You should know the formulas based upon hours, based upon output. Especially when I'm going to go to fixed overhead, it's going to be, or when I go to overhead, we will have two versions: output based version and hours based version. You should understand both because you never know in exam which one is going to be applicable. इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ. ओवरहेड का प्रिपरेशन है ये. So बच्चों, what is standard output? Standard output is in actual time. In actual time, how much output should have been produced? बच्चों actual time मैंने कितना दिया था ऊपर? 80 यूनिट्स के लिए 1500 मिनट लिए उससे स्टूडेंट ने. 1500 मिनट मतलब कितना टाइम लिया? 25 घंटा लिया. 25 घंटे में कितना करना चाहिए था उसने? 25 hours into 60 minutes. एक यूनिट को उसने 20 मिनट लेने चाहिए था. डिवाइड बाय 20 मिनट पर यूनिट. 75 यूनिट्स बनाने चाहिए थे उसने. ऊपर इफिशिएंसी कितना है तेरे बच्चों? 26.26 66 अपॉन 25. 106% आया था ना. अब यहां पर भी देखेंगे हम. यहां पर भी मैंने 80 अपॉन 75 किया तो आंसर विल बी मोर देन 100. आपने 80 बनाया जबकि आपने 75 बनाना चाहिए था, तो आपका इफिशिएंसी आता है. इफिशिएंसी इज AO actual output divided by SO standard output into 100. 106% exact. You should get same answer. ये रेशो अगर 100 से आगे है ना, तो आपका efficiency ratio will be favorable. Efficiency variance will be favorable. Else
your efficiency variance is going to be adverse. But do you understand? Concentrate. हमने कितने रेशियो वैरियंस देखे? दो. कौन से दो देखे? लेबर कॉस्ट वैरियंस टॉप पे था. व्हाट इज लेबर कॉस्ट वैरियंस का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स? Hours that should have been taken for actual output into standard rate minus actual hours into actual rate. Have you got it? Actual hours paid for. बहुत जल्द मैं actual hours worked for पे आने वाला हूं. Confusion नहीं होना चाहिए. दो बच्चे लेबर कॉस्ट के. One is responsible for, or for one Manke is responsible, and for one Harshad is responsible. Manke is responsible as a capacity of HR manager. HR manager is responsible for rate differences. Standard rate minus actual rate into actual hours. Harshad is responsible for efficiency. Standard hours minus actual hours. If actual hours are more than the standard hours, if actual is more than the standard, adverse. क्यों? You have taken more time than the time that you should have taken. Yes, no. अब ये लेबर इफिशियंसी वैरियंस के 3 बच्चे होने वाले हैं. बट बच्चों, जब ग्रैंड चिल्ड्रन होने वाला है तो ये SR सेम रहेगा. When you do the sub analysis is going to be off at standard rate only. See, ये SH और AH का हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली. SH और AH में जो डिफरेंस है वो क्यों है, उसका सब एनालिसिस हम कर रहे हैं. लेबर इफिशियंसी वैरियंस. कितने बच्चे? 3. मटेरियल में 2 ही थे, यहां पर 1 बढ़ गया. कैसे? टाइम पास हो गया ना. कौन था वो? बड़े क्या? Who was it? Just tell me the name. I'll give you a comment based upon who was it. ये कैरेक्टर मुझे पता ही नहीं. कौन है कैरेक्टर? So, listen. I hope you continue the same excitement later also. So, listen up. Understand the concept. अभी ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पर. बच्चों, can I say, up to this level, both the formulas were same as material. Now, labor efficiency variance, when you are going to do, formulas are going to be different slightly. But that slight difference you have to understand. Huh? It becomes bouncer if you don't concentrate. Labor efficiency variance. उसका सब एनालिसिस करने वाला हूं. First is idle time variance. First one is idle time variance. This is always adverse. Don't even think about it. Idle time variance is difference between what? Hours paid for and hours worked for. So how do you calculate this? Idle time variance is equal to idle time into standard rate. Finish. Idle time is difference between AHP minus AHW into SR. Actual hours paid for and actual hours worked for. Paid for will always be more than the worked for. Why? It would not happen that you would pay for 10 hours but worked for 12 hours.
तो बच्चों द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स पेड एंड एक्चुअल आवर्स वर्क इज ऑलरेडी एनालाइज्ड. अब जाके देखो मजा आएगा. लेबर मिक्स वैरिएंस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेबर गैंग वैरिएंस. ये क्यों होता है? मटेरियल के केस में मैंने क्या बोला था? मटेरियल आर मिक्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. Now here there is no question. I don't like the word mix actually here. So I should not use the mix. I should use a gang. Workers are not mixed like labor. Sorry, material. Concentrate and let me concentrate. Material, I talked about a standard mixing proportion. What is the standard mixing proportion? 9:5, I think. But actual proportion was 5:3. Just like that, there can be standard proportion of a gang. मतलब एक पर्टिकुलर टास्क है, वो टास्क ग्रुप ऑफ वर्कर्स को मिलके करना है. So to do a production, you have said 50 workers are required. These 50 workers should be in the ratio of 20 from skilled category, 20 from semi-skilled category, and 10 from unskilled category. 20, 20, 10. 2:1 was a standard proportion in which the actual 50 workers should have been there. But actual में आपको 60 वर्कर लगे, 50 से 60 ज्यादा वर्कर लगे, वो हम बात नहीं कर रहे हैं. देखिए एक्चुअल में 50 वर्कर लगे, बट वो 50 वर्कर कुछ अलग प्रोपोर्शन में है. The ratio or the proportion in which these 50 workers are required is different proportion. Let us say that proportion is 15, 25, 10. Workers 50 लगने चाहिए थे, actual में भी 50 ही है, लेकिन the proportion of the gang is different. If you have lesser workers from skilled category and more workers from semi-skilled category, variance will be favorable. क्यों? Skilled category के worker को आपको ज्यादा पे करना था. So you have more workers from semi-skilled category where rate per hour is lesser. Do you understand? So labor gang variance is basically LGV is equal to standard mix or standard hours. I'll say standard mix only. Standard mix minus what? Actual mix into SR. तो ये standard mix क्या है? Now this is important. This is AM divided in the standard proportion. But AM क्या है यहाँ पर? This is actual hours worked for. क्यों? worked और paid का जो difference है वो already left hand side में गया है बच्चों. प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स, फिर आपको समझ में आएगा ये. स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्कड डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन इनटू एसआर. व्हाट इज इनटू एसआर? स्टैंडर्ड रेट. ये भी वर्कर बाय कैटेगरी बाय कैटेगरी आता है. ये जैसे मटेरियल का भी कैटेगरी बाय कैटेगरी आता था, ये भी कैटेगरी बाय कैटेगरी आएगा. एंड द फाइनल रेशियो इज लेबर यील्ड वैरिएंस और लेबर सब इफिशिएंसी वैरिएंस बोलते हैं इसको, और लेबर सब इफिशिएंसी वैरिएंस. I'll use a connector. So concentrate. लेबर सब इफिशियंसी वैरिएंस ये क्या है? ये वर्कर का इफिशियंसी का मतलब. दिस इज रियल वैरिएंस. आइडल टाइम हमने निकाल दिया, एक्चुअल आवर्स वर्क और पेड का डिफरेंस निकाल दिया, एक्चुअल आवर्स वर्क अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन में है तो वो भी निकाल दिया हमने, है ना बच्चों? ये एक्चुअल आवर्स वर्क है दोनों. अब ये सही, ये जगह पे एक्चुअल आवर्स वर्क ही आएगा सब जगह पे. वी आर गोइंग टू यूज एक्चुअल आवर्स वर्क नाउ बिकॉज वर्क और पेड का डिफरेंस हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है. बट इफ देयर इज नो आइडल टाइम,
इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ये होगा ही नहीं ना कहानी में फिर। अब देखो, दिस इज द रियल वैरियंस। दिस वैरियंस बेसिकली टेल्स यू whether your workers are like Narendra Modi or your workers are like. I did not say anything. So, are they efficient workers or are they inefficient workers? This ratio will tell you. This variance will tell you. शांत हो जाओ बालकों। A, labor efficiency variance is equal to SY minus AY. What is SY? अरे लॉन्ग फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, चुप बैठो यार, कभी तो लेवल अपना इंप्रूव करो। SY is output that should have been achieved. Standard yield is output that should have been achieved in actual hours worked for. ये कैटेगरी बाय कैटेगरी वर्कर नहीं है, बाय ऑल वर्कर्स। इन एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर बाय all workers. All workers put together in the actual hours that they have worked, how much output should have been achieved is known as what? Standard yield. कितना आउटपुट आना चाहिए था, ऑल वर्कर्स ने जितना काम किया तो कितना आउटपुट आना चाहिए था। कैसे निकालोगे आप ये? देखो, क्विक, how do I calculate this? Let me give a simple example. Your standard is as under 3 hours of work by category A worker, 2 hours by category B worker, and 5 hours by category C worker should lead to 30 units. क्या बोला मैंने? 3, 2 and 5 hours by category A worker, category B worker and category C worker put together should produce how many hours? Should produce 30 units. ये आपका स्टैंडर्ड है बच्चों, बट स्टैंडर्ड इज फॉर 30 यूनिट्स। 30 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा काम करना पड़ता है सबको मिला के, है ना? अब मैं बोलता हूं, ये सब वर्कर ने पुट टुगेदर 3400 घंटे काम किया। 10 आवर्स में 10 गैंग आवर्स और 10 आवर्स पुट टुगेदर they should make how many units? 30 units. सबका 10 घंटा मिला के 30 यूनिट बनने चाहिए। तो सब लोगों ने अगर 3400 घंटा काम किया है तो कितना यूनिट बनना चाहिए? कितना था एग्जैक्ट? 10,200 यूनिट्स। ये 10,200 यूनिट्स है ना, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड यील्ड। 10 घंटे में 30 यूनिट बनना चाहिए, तो 34 घंटों में कितने यूनिट बनने चाहिए? 10,200। एक्चुअल यील्ड आ गया 10,100। क्या हो गया है? Adverse. But SY minus AY will be answer in quantity terms. We don't want to answer in quantity terms. We want to answer in rupee terms. So you should multiply by standard labor cost. Bachcho, this is not going to be standard labor cost for each category. This is going to be what? Standard labor cost per unit of FG. ये कैसे कैलकुलेट किया था बच्चों आपने? The same way that material का कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कैसे निकालेगा बच्चों? टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, बिकॉज स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, यू विल गेट व्हाट? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। हैव यू अंडरस्टूड? तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता है? मैंने स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कार्ड बनाया था ऊपर, और उसमें लेबर कॉस्ट था, उसमें मटेरियल कॉस्ट था, उसमें ओवरहेड थे, सब कुछ थे ना उसमें। गुड।
So labor efficiency variance. Have you understood labor efficiency variance? This variance actually tells you whether your workers are efficient or workers are inefficient. Let us summarize all labor variances on your screen. On your screen, labor cost variance. Labor cost variance is equal to standard labor cost minus actual labor cost. Standard labor cost is equal to SH into SR minus AH into AH. यहां पर क्या है बच्चों? Actual hours paid for. Good. इसके कितने बच्चे हैं? कौन से दो बच्चे हैं? Labor rate variance. Who is responsible? HR manager. Labor efficiency variance. Who is responsible? Production manager. Labor rate variance is equal to standard rate minus actual rate into actual hours paid for. समझ गए आपको? क्यों? रेट का जो भी डिफरेंस है into actual hours. He is not supposed to ask why are you requiring workers for more hours or lesser hours. जितना भी hours के लिए वर्कर चाहिए मान के is supposed to provide them. Right hand side, labor efficiency variance. Labor efficiency variance is equal to standard hours minus actual hours multiplied by standard rate. Actual hours paid for. Labor efficiency के तीन बच्चे. कौन से तीन बच्चे? Idle time, labor gang variance, labor efficiency or labor sub efficiency variance. Idle time variance, idle time into standard rate. Labor efficiency, labor gang variance, SM minus AM into SR. But AM here is actual hours worked for. SM is actual hours worked for distributed in standard proportion. Right hand side, labor sub efficiency variance, standard yield minus actual yield into standard labor cost per unit of FG. Do you get my point? Standard yield मतलब क्या है? Output that should have been achieved by using actual hours worked for. And actual hours worked for, right? I go to next variance. Variable overhead variance. Variable overheads are more or less similar to material and labor. But यहाँ पर एक twist आता है. Fixed overhead, I'll do it later. Variable overhead सुनो. Variable overhead variance. Listen up carefully. What is variable overhead variance? In the morning, when I discussed overhead chapter, I said under absorption or over absorption is nothing but total overhead variance. Now, if you work it out with reference to variable overhead, it will be called as variable overhead variance. If you work it out with reference to fixed overhead, it will be called as fixed overhead variance. But UA, OA, what was UA? Under absorption. How did you work it out? Difference between absorbed overhead and
actual overhead. बच्चों, absorbed overhead is nothing but overheads that should have been incurred for actual output, which is nothing but standard overheads. The word absorbed overhead and the word standard overhead are same. Headline. Absorbed overheads and standard overheads are one and the same. बच्चों, सिर्फ यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि ये कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. एक तो आर्स बेस्ड और दूसरा है आउटपुट बेस्ड. मैं दोनों सिखाने वाला हूं, बट दोनों को मैं मिक्स नहीं करने वाला हूं. पहले मैं पूरा आर्स बेस्ड सिखाता हूं, फिर मैं पूरा आउटपुट बेस्ड सिखाता हूं क्वांटिटी टर्म्स में. दोनों आपको समझना है, बिकॉज एग्जाम में आई कैन नॉट गिव यू गारंटी दैट सम विल बी ओनली आवर्स बेस्ड और ओनली आउटपुट बेस्ड. यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन. हाँ, फॉर्चुनेटली एक चीज यहां पे अच्छा है, यू डोंट हैव सब एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड. यू जस्ट हैव ग्रैंडफादर एंड फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है. तो बच्चों, like every other variance, this is difference between standard cost and actual cost. But here standard cost is same as what? Absorbed overheads, right? So VOH, variable overhead variance, is equal to standard overheads minus actual overheads. Standard overheads I can calculate. ये सब कुछ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आर्स बेस्ड फॉर्मूलाज पे. आउटपुट बेस्ड फॉर्मूलाज बाद में. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे बच्चों? SH इंटू SR. व्हाट इज SH? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर actual output into what? Standard rate minus AH into AR. सिंपल है. सेम फॉर्मूला लगा ना लेबर के जैसे. खत्म. उसके दो बच्चे तो भी वो भी लेबर के जैसे ही. सेम फॉर्मूला. नाम सिर्फ क्या होने वाला है, बदलने वाला है. Instead of labor rate variance, I am going to call it as variable overhead expenditure variance. Variable overhead expenditure variance. And दूसरा क्या बोलने वाला मैं? So the other one I am going to call it as variable overhead efficiency variance. Variable overhead expenditure variance. Expenditure is due to the difference in rate. क्या फॉर्मूला लगाया था आपने? Oh, when I say SR here, by the way, this is not a standard labor rate. Oh, this SR को circle करके लो. It is nothing but absorption rate. This is nothing but absorption rate per hour. This is nothing but absorption rate per hour. Now, expenditure variance. Who is responsible for this? Just like HR on here, there will be some person who will be responsible for spending. What is the formula that you use in labor? For labor rate variance, difference between SR and AR. SR AR into AH. AH was what? Actual hours, actual labor hours. यहां पर भी वही फॉर्मूला. Variable overhead expenditure variance. You could create a formula of difference between what? Standard rate
एंड एक्चुअल रेट. स्टैंडर्ड रेट कैसे आता है एक्सप्लेन करता हूं. आई हैव वन सम ऑन दिस माइनस एक्चुअल रेट इनटू AH. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस सेम फॉर्मूला SH minus AH into SR. Into SR. इन सब के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सम एंड सॉल्यूशन देके रखा है ऑन पेज नंबर समथिंग. दैट समथिंग इज 18 नंबर. बहुत बेसिक सम है बट पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा. एक ही सम से मैंने फिक्स ओवरहेड भी लिया है, वेरिएबल ओवरहेड भी लिया है. अभी मैं फिक्स ओवरहेड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. आई एम ऑल्सो नॉट एक्सप्लेनिंग वेरिएबल ओवरहेड ऑन आउटपुट बेस. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वेरिएबल ओवरहेड ऑन आवर्स बेस्ड. पेज नंबर 18. एग्जाम्पल कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन. बहुत बेसिक एग्जाम्पल है बच्चों. एब्सॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड डेटा. पर्टिकुलर बजट एक्चुअल. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स 30,000 एक्चुअल में 33,000. अब बोले सर ये वेरिएबल ओवरहेड है या फिक्स ओवरहेड है. मैंने कुछ दिया नहीं है. यू अज्यूम फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड देन सॉलिड देन अगेन अज्यूम दैट दीज आर फिक्स ओवरहेड एंड देन सॉलिड. बट अभी हम फिक्स करने वाले क्या नहीं. क्वांटिटी ऑफ आउटपुट hours, actual hours. After calculating under or over absorption, give analysis of UA/OA, assuming these variances, these overheads are variable overheads, assuming these overheads are fixed. Either you assume them to be variable or you assume them to be fixed. हम अभी फिक्स नहीं करने वाले, हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, वेरिएबल. मेथड 1 आउटपुट बेस्ड. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन. अभी तो एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे. कम डाउन बिलो. मेथड 2 मिल गया आपको नीचे. आवर्स वेस्ट. तो पहले एब्सॉर्प्शन रेट निकालो पर आवर. एब्सॉर्प्शन रेट कैसे आता है, बजटेड डेटा पे. बजटेड ओवरहेड्स 30,000 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स 9,000. पर आवर आ गया 3.33. मिल गया क्या 3.33. पेज 18 बॉटम. 3.33 पर आवर. एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड. एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब क्या है, कितना ओवरहेड लगना चाहिए था. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट पहले निकालना पड़ेगा. स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एब्सॉर्प्शन रेट ना. कितने यूनिट बना रहे आपने. एक्चुअल आउटपुट के 2800 यूनिट है. 2800 यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे बच्चों. एक यूनिट को 3 घंटा लगता है स्टैंडर्ड के हिसाब से. सो फॉर 2800 यूनिट्स यू शुड हैव टेकन 2800 इंटू 3 7,000 नहीं 8,400 आवर्स. व्हाट इज 8,400 एसएच समझ गया क्या आपको. इंटू 3.33 के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था. तो 28,000 का खर्चा होना चाहिए था. एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इज नथिंग बट स्टैंडर्ड ओवरहेड. 28,000 का खर्चा होना चाहिए था लेकिन खर्चा कितना हुआ, ऊपर देखो 33,000. सॉरी हाँ करेक्ट 33 का खर्चा हुआ. तो UA/OA इज एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड. अगले पेज पे गया वो आंसर. 28 माइनस 33 5,000 इज एडवर्स. बच्चों ब्रैकेट हाईलाइट करो. इट इज सेम वेदर ओवरहेड्स आर वेरिएबल और फिक्स. मेन जो फॉर्मूला है ना वो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड के लिए दोनों के लिए सेम है. मेन फॉर्मूला इज नथिंग बट UA/OA. अरे यस नो. क्या अलग है वेरिएबल और फिक्स के लिए, एनालिसिस. क्यों अलग है, जब फिक्स एक्सप्लेन करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं एक्सप्लेन करता हूं. एनालिसिस अलग है. एनालिसिस अज्यूमिंग ओवरहेड्स एज वेरिएबल. देखो मिल गया नीचे 19 पेज नंबर पे. एनालिसिस यूजिंग ओवरहेड्स एज फिक्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन रेट SR AR. SR मतलब क्या था 3.33 पर आर. खर्चा 3.33 होना चाहिए था. एक्चुअल रेट देखो, कम बैक टू पेज 18. एक्चुअल ओवरहेड्स आर 33,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स आर 8,700. कितना हो गया पर आर. अरे पर आर कितना हो गया 3.79. लेकिन खर्चा कितना होना चाहिए था 3.33. ऐसे कितने आवर्स के लिए एक्स्ट्रा इंकर हो गया 8,700 आवर्स के लिए. सो एडवर्स इज हाउ मच 4,000. डिड यू गेट इट. मान के इतना पेज नंबर 19 यू आर लुकिंग एट 18. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन SH एंड H. SH इज व्हाट, स्टैंडर्ड आवर्स. 8,400 आवर्स लेना चाहिए था.
लेकिन कितना आवर्स लग गया? 5700 नहीं रे बाबा, 8700. प्रिंटिंग मिस्टेक उधर, लेकिन आंसर करेक्ट है. अरे मिस्टेक हो गया होगा. 8700 है ना, इंटू 3.33. व्हाट इज 3.33? 100 आवर्स, सॉरी 100 रेट. डिड यू गॉट इट? 1000 रुपीज. समझा आपको? 4 और 1 का टोटल कितना हो गया? 5. व्हाट वाज दिस? दिस वाज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. इसका एनालिसिस हमने क्या किया? अज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स किया, एंड द बेसिस ऑफ आउटपुट किया क्या? ऑन योर स्क्रीन समरी. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस डिवाइडेड इनटू, ओके पहले फॉर्मूला, गॉडफादर फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड. स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट. हैव यू गॉट इट? सब एनालिसिस में 2 बच्चे, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड इफिशिएंसी वेरिएंस. वेरिएबल के लिए बोल रहा हूं. एक्सपेंडिचर मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. इफिशिएंसी में SH माइनस H into SR. Because when you analyze efficiency, you are not concerned with the rate difference. And when you analyze expenditure, you are not concerned with efficiency. Are you clear with this? Doubt anyone has? What we are not covered? Variable overhead based upon output. Same answer आएंगे, formula थोड़ा अलग होगा. And what we are not done? Fixed overhead variance. Right? I'll cover up that. No. Now we'll take a break. Shut your mouth, listen. No. Fixed overhead I'll require a lot of time. I'll cover up that tomorrow, but only few students after the advanced account lecture. 10 बच्चे को. I'll take a break. We'll make a video like mind map. I'll post it. So fixed overhead. जिसको रुकना है सब लोगों को रुकना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. जिनको रुकना है कल ही खत्म करते हैं क्योंकि लिंक रहेगा. Fixed overhead it's too good and fixed overhead is too complicated. Too good and too complicated. क्यों? उसके 2 बच्चे होते हैं, फिर एक बच्चे का 3 बच्चा होता है. कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस. बच्चों, it is too good to understand. बिजनेस करना है ना, सबसे बड़ा रिस्क कहां पे होता है? वेरिएबल कॉस्ट में नहीं होता है, फिक्स्ड कॉस्ट. और वो रिस्क का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो एक ही सबका बाप है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. दैट टेल्स यू एवरीथिंग.